Research in Higher Education at National Institution of Education and Planning, NEPA, New Delhi. He has previously served as a professor of education and was head Department of Education and Dean Faculty of Education at Chaudhry Charan Singh University, Meerut. His research specialization are teachers education, education technology, vocational education. He has received several prestigious international research scholarship like Commonwealth Academic Fellowship of CSC, UK, Doctoral and Senior Research Scholarship of DAD, Germany, Emrys Mundus, Visiting Professor Scholarship of European Commission, National Scholarship for Slovak Republic, Mashhav Scholarship of Israel Government, and is a Research Exchange Scholarship of MSHS, France. He's also the reception of the Joint Research Project under ICSSR and NIHSS South Africa, and member of academic bodies of several institutions and organizations in India and abroad. He published widely in journals of international repute, authored reference book, including his popular book, Learning and Teaching for Teachers, completed research and development project, developed educational media program, and supervised PhD scholars. His educational visit include Germany, UK, France, Denmark, Netherlands, Switzerland, Spain, Australia, New Zealand, Vietnam, Malaysia, Israel, Japan, and South Africa. So again, I welcome Dr. Pradeep Kumar Misra sir to this afternoon session, and not taking much of time, I would hand over the session to him. He will take a lecture, single lecture. After that, another resource person will be there. तो सर का जब लेक्चर कंक्लूड होगा उसके बाद में दूसरा हमारा लेक्चर रहेगा. So participants are requested that they should be get connected to the meeting. Don't leave the meeting after the lecture of Mishra sir is over. Over to you, sir. Thank you so much for giving me this opportunity to can you hear me? Yes, sir. Yes. Yeah. Okay. So thank you so much for giving me this opportunity, and I'm grateful to Dr. Raipe for this opportunity. And friends, this opportunity is for a purpose, and the purpose is that we are going to learn. We are going to learn in company of each other. So friends, the purpose is we are learning, and we are learning for our professional development, and we are learning for our professional development, as well as we are learning so that we can contribute in a better way. And I always say that learning is a two-way process. Two-way process means where we are learning from each other, and two-way process means where interaction is going on. So I am telling something, you are also sharing, you are asking questions, I am responding, I am asking questions, you are responding. So your comments, your arguments. So my humble request to all of you is please feel free to ask questions. Don't think that all of results is no, because is not so based on some changes in activity. If you ask question to stop me in between, please raise hands. Don't be shy. You can ask or you can respond in English or Hindi as you like. The only protocol that we have to follow is that when we are speaking, of course, we have to unmute ourselves, but when we are not speaking, we have to mute ourselves, because otherwise echo will come, and it will disturb the whole conversation. This is the only protocol that we have to follow. And if possible for you, please keep your cameras on. So then I will feel that I'm in a very good company. I am talking to colleagues sitting there. And of course, I can name you, I can ask question, and whenever I am asking question, don't think that I am judging you. I am asking questions to make conversation lively. So friends, with this note, I'm again and note that I'm grateful to Dr. Raife for giving me this opportunity. Today we are going to discuss a topic
a relevant topic at that, I can say expectation of NEP 2020 is, and there are several key recommendations in NEP 2020, and a prominent recommendation is to promote multidisciplinary higher education. So bring multidisciplinarity in higher education. So we will discuss this topic, what is multidisciplinary higher education, how we can promote multidisciplinary higher education in our institution, in our campuses, in courses we teach. So we will discuss this. So if you say, I can continue in English, if you say I can speak in between Hindi and English, so what will you prefer? It's up to you. It's up to you. किस में बात करें, कैसे चले, बात पहुंचनी जरूरी है. So पार्टिसिपेंट आप अनम्यूट कर कर बोल सकते हो. yes, you can share your thought because both language, sir. Okay, Both that's fine. language. That's fine. So my presentation is English. In between, I will keep switching English and Hindi, but it's okay. Thank you so much because the purpose is communication. मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. किस भाषा में हम बोलते हैं वो कम महत्वपूर्ण है. So बात होगी multidisciplinary higher education की. Friends, we will start with discipline. और व्हेन आई से डिसिप्लिन, ये मैं अनुशासन की बात नहीं कर रहा. डिसिप्लिन बिकॉज वी बिलोंग टू, लाइक यू से, आई एम फ्रॉम सोशल साइंसेज, यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, यू आर फ्रॉम फिजिकल साइंसेज, सो माय डिसिप्लिन इज डिफरेंट, योर डिसिप्लिन इज डिफरेंट. आई एम टॉकिंग इन दैट सेंस. सो वी बिलोंग टू डिफरेंट डिसिप्लिन. लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, और मैं आपका पर्सपेक्टिव चाहता हूँ, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे परिभाषित करते हैं, हाउ डू यू डिफाइन डिसिप्लिन, आप कैसे परिभाषित करते हैं डिसिप्लिन को. अपने को अनम्यूट करके बोल सकते, बातचीत करेंगे ना, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, समझेंगे, सवाल जवाब करेंगे, तभी मजा आएगा. तो आपकी नजर में, बिकॉज यू से आई एम फ्रॉम सोशल साइंस डिसिप्लिन, तो यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब क्या है, कैसे परिभाषित करते हैं डिसिप्लिन को. सर मैं बात करूं? हाँ हाँ बोलिए ना, क्या नाम क्या है आपका, मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ. हाँ, रमेश सोनवल का नाम है. जी जी रमेश आई जी, एम बहुत फ्रॉम. बढ़िया. जी हाँ, या बताइए. तो सेम कंटेंट या आशय को लेकर जो भी पाठ्यक्रम की रचना की जाती है, उन पाठ्यक्रमों के बंच को हम डिसिप्लिन कहेंगे. ओके, बढ़िया. रमेश जी ने अपनी एक बात रखी कि एक तरह के पाठ्यक्रमों को लेके चले तो डिसिप्लिन. और कोई साथी, फील फ्री टू स्पीक. देखिए, जब सबकी बात सुनेंगे ना तो मजा आएगा, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आनंद आएगा. कोई और साथी? Sir, may I can share my thought about it? यस, श्योर. Yeah, this is Dr. Labuni Basu from West जी, Bengal. यस Sir, डॉक्टर लावनी. Yes, sir. Sir, I think discipline is basically a bunch of subjects which are relevant and aligned with each other, and also pertaining the same, diagrammatic knowledge, and which is very much fruitful and profound. And this knowledge are very much relevant and aligned from the particular domain. Okay, very good. So two wonderful perspective, good perspective coming, one from Ramesh ji, another from Lavani ji. So yes, I am adding something into it because we use this term. हम ये इस्तेमाल तो करते हैं, कहते भी हैं, लेकिन कई बार हमको ये स्पष्टता कम होती है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, हाउ वी कैन से योर डिसिप्लिन इज दिस, माय डिसिप्लिन इज दिस. क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए पहले तो डिसिप्लिन को समझना ही पड़ेगा. सो लेट मी शेयर सम ऑफ माय पर्सपेक्टिव. पहली पहली सरल सी परिभाषा, शुरुआती परिभाषा जिसको कह सकते हैं, बिगिनर्स डिफिनीशन, a concentrated and bounded academic field of study. Friends, pay attention to these two words, concentrated एक जगह फोकस हो, जैसा रमेश जी कह रहे हैं, लावड़ी मैम कह रही, एक जगह फोकस कर रहे हैं. कंसंट्रेटेड एंड बाउंडेड, very important, bounded academic field. This is social science discipline boundary. So bounded academic field of study. This is a very popular, I can say, definition of discipline, but this is not complete. But this is, of course,
स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत यहां से कर सकते हैं। एक और परिभाषा देखें, ए स्पेसिफिक बॉडी ऑफ टीचेबल नॉलेज। There is knowledge and then teachable knowledge. The terminology is teachable knowledge, where we can teach that knowledge to others with its own background of education, training, procedure, methods, and content areas. तो एक ऐसा ज्ञान जो टीचेबल है, दूसरों को प्रेषित किया जा सकता है, और जिसकी अपनी बैकग्राउंड है, सिखाने के अपने तरीके हैं, अपनी विधियां हैं, अपना कंटेंट है, उसको भी डिसिप्लिन कहते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान जरूर दें, क्योंकि अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो आप कभी भी डिसिप्लिन को बहुत आसानी से परिभाषित कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी डिसिप्लिन क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टेब्लिश डिसिप्लिन? विशेषताएं क्या हैं एस्टेब्लिश डिसिप्लिन की? वी कम अक्रॉस सेवरल डिसिप्लिन। सो देखिए डिसिप्लिन में क्या विशेषताएं होती है। नंबर वन, दे क्लेम ए बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट सर्टेन सब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट, कि वो कहते हैं हमारे डिसिप्लिन में इन इन विषयों का ज्ञान मिलता है, इन विषयों के बारे में बात होती है। तो वन डिसिप्लिन रिलेटेड टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक नंबर वन। अगली क्या है? दे हैव मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। साइंस में हम एक अलग तरीके से नॉलेज इकट्ठी करते हैं, सोशल साइंसेज में अलग तरीके से करते हैं, ह्यूमैनिटीज में तरीका बदल जाता है, आर्ट्स में तरीका बदल जाता है। सो दे हैव मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड थ्योरीज टू ऑर्डर दैट नॉलेज। द वन रोल इज दैट वी आर एक्वायरिंग नॉलेज एंड देन वी आर ऑर्डरिंग दैट, देन वी आर सीक्वेंसिंग दैट नॉलेज। सो दे हैव मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड थ्योरीज टू ऑर्डर दैट नॉलेज। तो पहली विशेषता हो गई, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, a body of knowledge about certain subjects, and the second, methods of acquiring knowledge. Third, they seek to produce new knowledge, concept and theories within or related their domain. हम अपनी डिसिप्लिन के अंदर ही नए ज्ञान का सृजन करते रहते हैं, नए कंसेप्ट लेके आते हैं, नए सिद्धांत लेके आते हैं, लेकिन सब कुछ हमारी अपनी बाउंड्री के अंदर होता है। बिल्कुल जैसे हमारा घर है ना, अगर उसको हम डिसिप्लिन मान लें तो जो कुछ भी हो रहा है हमारे घर के अंदर हो रहा है। then they possess a recognized core of courses. So in every discipline there are subjects, and related to those subjects there are number of courses. So in social sciences these subjects are part of social sciences, and and these courses are part of these subjects. So they possess a recognized core of courses. They have a community of experts, very important. In every discipline there is a community of expert, and every expert they proudly say, look, I belong to this discipline. और कई बार तो हम लोगों में झगड़ा भी हो जाता है कि किसकी डिसिप्लिन ज्यादा अच्छी है, किसका बेहतर है, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो सबके कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट है। सोशल साइंसेज की अलग अलग कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट है, फिजिकल साइंसेज की अलग है। सो दे हैव ए कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। Very important, and maybe this is the reason that NEP is saying we have to move from disciplinary to multidisciplinary. They are self-contained. सेल्फ कंटेंट, ऐसा कहा जाता है कि जो डिसिप्लिन है उसमें हम अपने में ही सीमित रहते हैं। डिसिप्लिन इज माई डिसिप्लिन एंड आई एम स्टिकिंग टू इट। सेल्फ कंटेंट एंड सीक टू कंट्रोल देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। तो वो अपने डोमेन को कंट्रोल करते हैं और सेल्फ कंटेंट रहते हैं, जो कुछ हो रहा है वो हमारे डिसिप्लिन के अंदर हो रहा है। एंड द लास्ट इज दे ट्रेन फ्यूचर एक्सपर्ट इन देयर डिसिप्लिन, क्योंकि अगर भविष्य के लिए लोगों को तैयार नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन आगे नहीं बढ़ेगा। सो दे ट्रेन फ्यूचर एक्सपर्ट इन देयर डिसिप्लिन। एंड हाउ दे ट्रेन? दे ऑफर डिफरेंट मास्टर्स प्रोग्राम, डिफरेंट डॉक्टोरल प्रोग्राम्स। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ established discipline. And luckily we belong to one discipline or another discipline. आप में से हर किसी का कोई ना कोई डिसिप्लिन है, और हर डिसिप्लिन में जो स्टेब्लिश डिसिप्लिन है उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगी। सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन specify, you can identify, you can explain your discipline to others. Now the question is, NEP is saying disciplines are perfect.
but we have to move towards मल्टीडिसिप्लिनरी। तो क्यों ऐसा कह रही है, उसका मतलब क्या है, कैसे कर सकते हैं, उसको भी चर्चा करेंगे। कहीं कोई मन में सवाल आए तो जरूर पूछिए, प्लीज फील फ्री टू आस्क, आई विल कीप एक्सप्लेनिंग। लेकिन आप पूछिए एंड यू फील फ्री टू गिव योर इनपुट, आप अपनी बात भी कहिए। अब डिसिप्लिन से मैं चलता हूं आगे। बेस्ड ऑन डिसिप्लिन देयर इज ए टर्म डिसिप्लिनरिटी। सो डिफरेंस डिसिप्लिनर एंड डिसिप्लिनरिटी, इसका क्या मतलब हुआ? डिसिप्लिनरिटी इज व्हाट रिजल्ट्स फ्रॉम डिसिप्लिन ओरिएंटेड एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर। हम अपने डिसिप्लिन में, जो सपोज यू आर अ टीचर ऑफ सोशल साइंसेज, in your discipline is social science, and then you are teaching a subject, you are teaching a प्रदीप course, मिश्रा बोल के कोई है? you are asking a question, someone is asking a question, कोई चलो मैं सवाल आप हस्बैंड पूछ को रहे हैं? जीनत तो मैडम आपका माइक बंद करिए प्लीज। रोल नंबर 77 आपका माइक बंद कर दिए। ओके, गणेश शिंदे रोल नंबर 55 आपका माइक बंद करिए। सर ने इतना अच्छे से आपको बताया कि माइक खोलकर सवाल करना एक चीज हो गया, लेकिन माइक म्यूट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, इसलिए सर हम लोग कोई भी कोर्स में हम अलाउड नहीं करते नहीं कोई कोई बात नहीं, चलेगा, कोई कोई रेफे साहब, नो इशू, ये चलेगा, बातचीत होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, आप ध्यान रखें, क्योंकि बातचीत अगर हम बंद करेंगे मजा नहीं आएगा, तो चलेगा थोड़ा। डिसिप्लिन, वी मूव फ्रॉम डिसिप्लिन टू डिसिप्लिनरिटी। अक्सर कंफ्यूजन होता है कि भाई डिसिप्लिन क्या है, आई एम पार्ट ऑफ दैट डिसिप्लिन, नो, देन एज पार्ट ऑफ दैट डिसिप्लिन व्हाट यू डू, क्या करते क्या है आप, तो उसी को डिसिप्लिनरिटी कहते हैं। व्हाट रिजल्ट फ्रॉम डिसिप्लिन ओरिएंटेड एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर, कि भाई मैं तो इकोनॉमिक्स से हूं, मैं तो इसी तरीके से रिसर्च करूंगा, ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, ये मेरा सिखाने का तरीका होगा। सो मेरे डिसिप्लिन के लिए रूल्स रेगुलेशन सेट हैं, मैं उसी तरह से आगे बढ़ूंगा। सो व्हाट रिजल्ट फ्रॉम डिसिप्लिन ओरिएंटेड एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर्स, there is also a good definition of disciplinarity, refers to expertise in a discipline। और एक मैं यहाँ पर साइड में बात ये कहूंगा कि मल्टी डिसिप्लिनरिटी पे जाने के लिए आपको डिसिप्लिनरिटी आनी जरूरी है। आपको आपकी डिसिप्लिन अच्छी आएगी, फिर आप दूसरे डिसिप्लिन के साथ जा सकते हैं। सो डिसिप्लिनरिटी रिफर्स टू एक्सपर्टाइज इन अ डिसिप्लिन विच इज एन स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज। एंड क्या क्या इसके अंदर आ जाता है डिसिप्लिनरिटी के अंदर? इट इंक्लूड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथोडोलॉजी। In every discipline, methodology is important. And the basic difference between one discipline and another discipline is methodology. मेरी मेथोडोलॉजी ये है, आपकी मेथोडोलॉजी ये है। मैं इसको जीवन से भी जोड़ता हूँ, मेरा काम करने का तरीका ये है, आपका काम करने का तरीका ये है, वो काम करने का तरीका ही लोगों को अलग करता है। सो नंबर वन, स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज है, understanding of the methodology, and the capacity to obtain, analyze, and employ specialized knowledge for various application। आप ये कर रहे हैं, ये पता है, तो आप कह सकते हैं कि लुक, आई बिलोंग टू दिस डिसिप्लिन एंड आई एम प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिनरिटी। जो आप करते ही हैं, बिकॉज यू आर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यू आर टीचिंग डिफरेंट कोर्सेज, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, तो आप सब किसी ना किसी डिसिप्लिन के से जुड़े हैं, और आप डिसिप्लिनरिटी भी प्रैक्टिस करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दो बातें अभी तक हो गई, व्हाट इज डिसिप्लिन एंड व्हाट इज डिसिप्लिनरिटी। नाउ वी विल मूव टू द टर्म, देयर आर थ्री अदर टर्म्स, बेसिकली देयर आर फोर टर्म्स: डिसिप्लिनरिटी, मल्टीडिसिप्लिनरिटी, interdisciplinarity, and there is a fourth term, transdisciplinarity। And often we get confused कि भाई डिसिप्लिनरिटी तो चलो समझ में आ गई, मैं अपनी डिसिप्लिन में जो कर रहा हूँ वो डिसिप्लिनरिटी है। मल्टी डिसिप्लिनरिटी क्या हुई, फिर इंटर क्या डिसिप्लिनरिटी क्या हुई, और ट्रांस डिसिप्लिनरिटी क्या हुई। सो दीज आर फोर पॉपुलर टर्म्स। और मेरा ये मानना है, आप भी मुझसे सहमत होंगे, कि हम शिक्षकों को इसकी समझ तो होनी चाहिए, बहुत स्पष्टता होनी चाहिए। वी हैव टू हैव ए क्लैरिटी, व्हाट इज मल्टीडिसिप्लिनरिटी, व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरिटी, एंड व्हाट इज ट्रांसडिसिप्लिनरिटी।
तो इससे पहले कि मैं अपनी बात आप तक रखूं, आपकी बात मैं सुनना चाहता हूं। आपकी नजर में इनमें अंतर क्या है? मल्टी, इंटर एंड ट्रांस डिसिप्लिनरिटी की बात मैंने पहले कर ही ली आपसे। बताइए ना, संकोच नहीं करना है, आपको जो लगता है वो बताइए, फिर हम लोग जोड़ेंगे, मिलके बात को आगे बढ़ाएंगे। यस। मल्टी मल्टी डिसिप्लिनरिटी में अलग अलग बहुत सारे डिसिप्लिन में जो अंतर संबंध है या उनका जो अलाइन को कोर कोर्स है, तो उसके बारे में जिक्र किया जाता है। और ओके। इंटरडिसिप्लिनरिटी में दो डिसिप्लिन का जो अंतर संबंध है उसको फोकस किया जाता है। और अपनी डिसिप्लिन छोड़ के अलग अलग डिसिप्लिन के जो भी एस्पेक्ट है या कंटेंट है, कोर्स है, तो उनका अपने डिसिप्लिन के लिए जो भी काम आता है, तो उसको ट्रांस डिसिप्लिनरिटी मेरे ख्याल से कहा जाएगा। बढ़िया। रमेश जी ने जो, आई थिंक रमेश जी बोल रहे थे ना? हाँ। तो आपने जो भी बात ये कही उसको मैं, ठीक है, उसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ हद तक आपकी बात सही है, कुछ और जोड़ेंगे ओके। इसमें, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई। और कोई साथी? ओके एनीवन एल्स? Sir, may I try? यस, श्योर श्योर। I'm Dr. Sabdesh, sir. Sir, I feel multidisciplinarity means the discipline in which you have got the knowledge of a particular discipline and you are following a particular disciplinarity. So, leaving your own discipline and practicing in multiple disciplines simultaneously, I feel is multidisciplinarity. That is number one, sir. ओके। Disciplinarity, I mean, whatever is your discipline and disciplinarity, and you are practicing into exactly complementary or a different discipline, like you are in biological sciences today. Tomorrow, you're doing it with technology. So, biological sciences with technology will be interdisciplinarity. Then, transdisciplinarity means where the subjects itself is different, and maybe in transdisciplinarity, maybe a cultural aspect is also there. I don't know, I may be wrong, sir, but transdisciplinarity cultural aspect is there, wherein you have shifting from one discipline like your biology or your technology or chemical sciences or physical sciences. That is what I feel is Okay, no, very good. I feel very happy when colleagues are speaking. They are bringing different perspective, and because there's a lot of confusion. What is the difference between disciplinarity, multidisciplinarity, and people perceive it in a different way and they practice in a different way. Although I'm not saying there is any sure short answer, but we will try. But thank you so much for your input. दो बढ़िया सुझाव मिले। और कोई भी साथी बोलना चाहते हैं तो मजा आ रहा है मुझे। This is also for my learning, and then of course I will bring my perspective into it. कोई और साथी भी करना चाहते हैं? क्योंकि ये, एक बार मेरा मानना है कि इसकी अच्छी समझ हो जाएगी तो फिर प्रैक्टिस आसान है। अगर समझ नहीं होगी तो मुझे लगता है कि बिना समझ के जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम जो कर रहे हो वो हम सोच के कुछ कर रहे हो, करेंगे कुछ और। तो चलते हैं, दो बढ़िया इनपुट मिले। जैसे दो साथियों ने दिया, आप भी बात करिए, बात करने में मजा आता है, मौका मत चूकिए। बात करने का प्लेटफॉर्म दिया है रेफे साहब ने हमको। अ, देखिए क्या है मल्टी डिसिप्लिनरिटी। एक एक पर्सपेक्टिव में एक आपको रियल लाइफ का भी एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट मी एक्सप्लेन दीज फर्स्ट। मल्टीडिसिप्लिनरिटी को ऐसा कहा जा सकता है, अप्लाइज टू स्टडीइंग ए सब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल डिफरेंट डिसिप्लिन एट द सेम टाइम। आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ने में आप तरह तरह के डिसिप्लिन का पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं। पर्सपेक्टिव फ्रॉम द डिफरेंट डिसिप्लिन क्रिएट ए ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। और जो आगे लाइन लिखी वो बड़ी महत्वपूर्ण है, यू क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द डिसिप्लिन बट द डिसिप्लिन कीप देयर ओन वॉइस। यानी आप एक ही जगह आप मूव करके पिक करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन अपनी जगह है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। यू आर पिकिंग फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन, लर्नर इज पिकिंग फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन।
तो मैं फिजिक्स का हूं, मैं हिंदी से कुछ सीख रहा हूं, मैं हिंदी से सीख रहा हूं, लेकिन हिंदी की डिसिप्लिन वही है, फिजिक्स की डिसिप्लिन वही है, केमिस्ट्री वही है, वो अलग अलग जगह, बट आई एम पिकिंग समथिंग फ्रॉम केमिस्ट्री, आई एम पिकिंग समथिंग फ्रॉम फिजिक्स, एंड आई एम पिकिंग समथिंग फ्रॉम हिंदी. सो आई एम improving, enriching myself from taking from different disciplines. मल्टी डिसिप्लिन, इसको फिर लौटेंगे, एक बार रिविजिट करेंगे, एंड आई विल गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल, तो और समझ में आएगा. कोशिश करेंगे इसको समझने की. यूजुअली ये थोड़ा मुश्किल होता है समझना, लेकिन कोशिश करेंगे, आसान है ऐसा कुछ. सो मल्टी डिसिप्लिनरिटी में एक चीज ध्यान रखनी है, डिसिप्लिन्स अपनी बाउंड्री, अपनी जगह नहीं छोड़ती है, जो यूजर है वो डिसिप्लिन के बीच में मूव करता रहता है. सेकेंड इज interdisciplinarity. Incorporates several fields of study to allow collaboration among diverse discipline. यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स मिल गए, केमिस्ट्री और बायो मिल गए, डिसिप्लिन्स आर कमिंग टुगेदर. फर्क क्या हुआ, मल्टी डिसिप्लिनरी में डिसिप्लिन अलग अलग हैं, उनकी नॉलेज हमने यूज की. इंटरडिसिप्लिनरी में डिसिप्लिन ही एक साथ आ गई. तो दोनों डिसिप्लिन, यहां खाली नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन आर कमिंग टुगेदर, आइदर स्पेसिफाई और ब्रॉडन स्टूडेंट एजुकेशन टू गेन अंडरस्टैंडिंग. अब हमने कहा बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, सो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कमिंग टुगेदर. सो यहाँ डिसिप्लिन मूव कर गई, यहाँ घर मूव हो गया. पहले में हमारे घर अलग अलग थे, हम अपने घर से बातचीत कर, लेकिन यहाँ घर ही आपस में साथ साथ आ गए. सो इंटरडिसिप्लिनरिटी. एंड नाउ आई कम टू द थर्ड, very important, and when our colleague, I cannot see the name, the cool, आपका नाम मैं नहीं सुन पाया. मैं डॉक्टर सबनिस, डॉक्टर सबनिस. ओके, तो सतीश, सतीश आपने सबनिस, सलील, सलील बोलिए, ओके ओके सलील. यू कैन कॉल मी सलील सर. ओके, सलील इज ओके. यस सर. ओके, तो सलील साहब जो कह रहे थे वो बड़ी अच्छी बात कही, कल्चरल एस्पेक्ट भी लेके आए. सो इट्स रियली गुड, वी कैन सी दिस फ्रॉम transdisciplinarity last, and I usually say is the highest stage, builds bridges across discipline, but also across the disciplinary structure altogether. जहां पर हम डिसिप्लिन के उससे आगे चले जाते हैं, हम कहते हैं नहीं, मोह माया छोड़ के आगे चले जाओ, बंधन तोड़ दो, जिसको ट्रांस में कहते हैं ना. तो वी आर नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट डिसिप्लिन, वी आर मूविंग बियॉन्ड डिसिप्लिन. आवर अल्टीमेट गोल इज टू इम्प्रूव सिचुएशंस. समाधान होना चाहिए, ये दुनिया बेहतर बननी चाहिए, समझ रास्ता निकलना चाहिए. किस डिसिप्लिन से आया, दो मिले नहीं मिले, कहाँ से कुछ लिया, ये मतलब नहीं है, एक बिल्कुल अलग हम चले गए. तो व्हेन वी आर मूविंग beyond discipline, you can say transdisciplinarity. So builds bridges across discipline, but also across the disciplinary structures altogether, linking the academic world with the practical world. जब मुझे पता नहीं है, मैं अपने क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूँ और मुझे कोई फार्मर आ गए और वो हमारे स्टूडेंट को कुछ अच्छा बता रहे हैं, तो वहां पर ये नहीं देखना उनकी डिसिप्लिन क्या, वो अगर हमारे स्टूडेंट को कुछ नॉलेज दे पा रहे हैं तो बस ठीक है. तो लिंकिंग द एकेडमिक वर्ल्ड विद द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड स्कॉलर्स विद नॉन एकेडमिक्स हु आर वर्किंग ऑन सिमिलर प्रॉब्लम्स और आइडियाज. तो एक तरह से ट्रांस डिसिप्लिनरिटी हाईएस्ट स्टेज है, जो कहती है सारे बंधन तोड़ दो, डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिन, इंटर डिसिप्लिन, इनसे परे चलो, दुनिया बेहतर बननी चाहिए, लोगों की जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, ये दुनिया खुशहाल होनी चाहिए, ट्रांसडिसिप्लिनरिटी. तो सबका, लेकिन मैं ये नहीं कहता सबका अपना महत्व है. डिसिप्लिनरिटी, मल्टी डिसिप्लिनरिटी, इंटरडिसिप्लिनरिटी, ट्रांसडिसिप्लिनरिटी, ऑल आर इंपॉर्टेंट, एंड यूजुअली द स्टार्टिंग पॉइंट इज डिसिप्लिनरिटी. अगर डिसिप्लिनरिटी नहीं होंगी और आप ट्रांसडिसिप्लिनरिटी की बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा. एक्सपर्टाइज तो होनी चाहिए ना, देन ओनली देन यू कैन कंट्रीब्यूट. ऑफन देयर इज ए क्वेश्चन, सर अभी तो मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात होने लगी है, तो मेरी अपनी डिसिप्लिनरिटी का क्या होगा? नो, दीज आर प्रैक्टिसेस. आपके डिसिप्लिनरिटी कहीं खतरे में नहीं है, ये नहीं सोचना है. दिस इज एन अप्रोच. सो यू आर कीपिंग योर डिसिप्लिनरिटी इंटैक्ट एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स मल्टी डिसिप्लिनरिटी एंड इंटरडिसिप्लिनरिटी. अब मैं एक जीवन का उदाहरण देता हूं, और
उसको मैं कोशिश करता हूँ उससे इसको समझाने की। आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, मैं खुद भी पीछे जाता हूँ अपने स्कूल के दिन में, जब हम लोग अपने घर से टिफिन बना के ले जाया करते थे। सलील साहब माँ जी बना के देती थी, हम टिफिन ले जाते थे। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि जब मैं अपना टिफिन ले जाता था और अकेले बैठ के अपना टिफिन खाता था, दैट इज डिसिप्लिनरिटी। रोज मेरा टिफिन, मैं बैठा हूं, अकेले ही खा रहा हूं, दिस इज डिसिप्लिनरिटी। एक दिन मैंने ऐसा सोचा कि मैं भी अपना टिफिन रखता हूं, तो सलील साहब भी अपना टिफिन रखते हैं, रमेश जी भी अपना टिफिन रखते हैं, लावड़ी मैम भी अपना टिफिन रखती हैं। लेकिन अभी क्या है, टिफिन सबके अलग अलग रखे हुए। लेकिन कुछ मैंने सलील साहब के टिफिन से खा लिया, कुछ सलील साहब ने मेरे टिफिन से खा लिया, कुछ हम लोगों ने लावड़ी मैम के टिफिन से खा लिया। लेकिन हमारे टिफिन इंटैक्ट हैं, हमारे टिफिन मिले नहीं हैं, टिफिन अलग अलग हैं, लेकिन हम एक साथ बैठे हैं और एक दूसरे के टिफिन से शेयर कर रहे हैं। इन माई व्यू, मैं गलत हो सकता हूं, बट इन माई व्यू दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरिटी। मल्टी डिसिप्लिनरिटी, वी आर कीपिंग अवर टिफिन इंटैक्ट, बट वी आर शेयरिंग दोज टिफिन विद अदर्स। अब एक दिन सलील साहब कहते हैं कि साहब आज थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने पूछा सलील साहब क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सलील साहब ने कहा एक्सपेरिमेंट ऐसा कि आज सारे टिफिन मिला देते हैं, सारी रोटी एक जगह, सारी सब्जी एक जगह, चावल जो भी है, चटनी एक जगह, तो सब मिला दिया। तो रोटी 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 एक जगह हो गई, चावल एक जगह, सब्जी एक जगह हो गई। और फिर हम लोगों ने खाया, हमें पता नहीं जो रोटी मैं खा रहा हूँ किस टिफिन की है, बस ये पता है रोटी है, मुझे चाहिए। तो सलील साहब मेरी नजर में दिस इज इंटरडिसिप्लिनरिटी, कि इंटरडिसिप्लिनरिटी। और एक दिन ऐसा हुआ कि सब टिफिन मिले हुए हैं और बहुत भूख लगी है। अब सलील साहब ने कहा कुछ भी दे दो, मेरी भूख खत्म होनी चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता रोटी दे रहे हो, चावल दे रहे हो, सब्जी दे रहे हो, गिव मी समथिंग, आई एम सो हंग्री। बस मेरा पर्पस सॉल्व होना चाहिए, कहाँ से आया, किस टिफिन से आया, कौन सा था, कुछ। दिस इज ट्रांस डिसिप्लिनरिटी। So, in a very simple way, we can say in disciplinarity, we are starting with our tiffin and moving to a situation where our ultimate goal is to satisfy our hunger or to fulfill our hunger, और उसके बाद फिर हम आगे चले गए। तो सबके अपने फायदे हैं, सबके और एक और एग्जांपल सली साहब अच्छा लगा हो तो एक और दे दूं, फिर आगे चलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वेरी नाइस, हाँ, थैंक यू सो मच। अ, दूसरा एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि यूजुअली विल नाउ लिव इन 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 2 रूम 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स एंड इंडिपेंडेंट हाउसेस, उसमें हम रहते हैं, दिस इज डिसिप्लिनरिटी। लेकिन आप देखते हैं गांव में अभी तो कम हो गए, लेकिन अभी भी चौपाल होते हैं। So when we go to Chaupal, people from different ages, from different discipline, from different walks of life, they are sitting together. They are sharing their experiences. We are learning from each other. That is multidisciplinarity. तो जब आप अपने BHK में बंद रहते हो, that is disciplinarity। और सलील साहब मजा कहाँ आता है, घर में ज्यादा या चौपाल में? आता तो घर में तो आता ही है, क्योंकि रोज ही वहीं रहना, लेकिन जब चौपाल जाते हैं तो हमारी रंगत बदल जाती है, कुछ मजा ज्यादा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, So एब्सोल्युटली। the Chopal is multidisciplinary, where people from different walks of life, different experiences are coming together, और आपको बहुत सारे समाधान मिल जाते हैं, बहुत सारी, क्योंकि आप कुछ अकेले तो लिमिटेड है, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव मिलता है। सो व्हेन यू कम बैक, यू आर अ बेटर पर्सन, यू आर एंजॉयिंग, यू आर स्माइलिंग। सो फ्रेंड्स, एक चीज हमको ध्यान रखनी है, कोई झगड़ा नहीं है कि मल्टी डिसिप्लिनरिटी में हम अपनी डिसिप्लिन छोड़ रहे हैं। नहीं, आप घर कहाँ छोड़ रहे हैं, अपने BHK में तो रह ही रहे हैं। बट व्हाट इज द हार्म इफ टाइम टू टाइम वी आर गोइंग टू चौपाल? अगर दूसरों के टिफिन से भी खाया तो क्या नुकसान है, मजा आएगा ना, उनके साथ हमें 1 माह का आशीर्वाद मिल रहा है, 4 माह का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि 4 जगह से मैं खा रहा हूँ। सो देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, देर इज नो, एंड नाउ द ओनर्स इज दैट वी हैव टू मूव फ्रॉम डिसिप्लिनरिटी टू मल्टी डिसिप्लिनरिटी, interdisciplinary, and then transdisciplinary. But in because for teachers, multidisciplinary is easy rather than interdisciplinary. Because interdisciplinary means you are mixing two discipline together. वो कई बार हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मल्टीडिसिप्लिनरी में मैं अपने स्टूडेंट को ओरिएंट कर सकता हूँ, कैसे करेंगे वो आगे चलेंगे।
तो आगे चलते हैं, अगर कोई मन में सवाल आ रहा हो कुछ तो पूछने की पूछिए, जरूर पूछिए, बातचीत करिए। वरना आगे चलते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी इन हायर एजुकेशन। मतलब क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी इन हायर एजुकेशन का? अगेन, ड्राइंग ऑन इंफॉर्मेशन एंड मेथड्स फ्रॉम टू आर मोर डिसिप्लिन, distinct from interdisciplinary in that it generally does not imply integrating the field together. तो आप फिजिक्स के टीचर हैं एंड यू आर सिटिंग विद ए कुलीग फ्रॉम सोशियोलॉजी, यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम सोशियो समथिंग फ्रॉम दैट कुलीग, एंड यू आर ब्रिंगिंग दैट नॉलेज इनटू योर क्लासरूम। दिस इज मल्टीडिसिप्लिनरी। सोशियोलॉजी वालों से कुछ सीख लिया और फिजिक्स में भी आपने वो बताया तो बताया। आपने, हो सकता है आप जो पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और फिर आपको एक दिन आइडिया आया कि क्या कोई पार्टिकल्स की भी सोशियोलॉजी हो सकती है क्या, उनका भी कोई समाज हो सकता है क्या। सो यू आर सिटिंग विद ए कुलीग फ्रॉम सोशियोलॉजी एंड यू आर ब्रिंगिंग ए टोटली न्यू परस्पेक्टिव। लोग कह रहे अरे सलील साहब को आज हो क्या गया है, आज पार्टिकल्स की सोशियोलॉजी बता रहे, रोज तो पार्टिकल्स बताते थे। सो फ्रॉम वेयर यू आर ब्रिंगिंग दिस नॉलेज, बिकॉज यू सिट यू हैव ए कप ऑफ कॉफी और टी विद ए कुलीग फ्रॉम सोशियोलॉजी। वो समाज की बात कर रहा था, आप पार्टिकल्स के समाज की बात करने लगे। सो दिस इज then sometimes you are putting methods from, you are taking methods from two disciplines। बाहर से नहीं लगता उनके अंदर कोई संबंध है, लेकिन जब उनको आपस में देखते हैं तो संबंध नजर आता है। आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं और रिसर्च कर रहे हैं, आप देखते हो, आप ये रिसर्च कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट और म्यूजिक का डेवलपमेंट क्या दोनों में कुछ रिलेशन है, किस तरह की मैथमेटिक्स थी, किस तरह का म्यूजिक था। सो यू आर Drawing ब्रिंगिंग, on information and methods on to are no different distinct. किसी का आप में माइक है, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। सो जुक्सटापोजिशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, तो हमें कई बार लगता है कि दूसरे डिसिप्लिन से हमको कुछ नहीं मिलेगा। इफ यू आर थिंकिंग दैट ओनली माई डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन, only I can learn from my discipline, this is a very, I can say, what I what to say. It's a very a rigid approach and very confined approach that you can say। नहीं, सबके पास कुछ बेहतर है, हम सबसे सीख सकते हैं। और भारत तो एक ऐसा देश है जो हम प्रकृति से सीखते हैं, जानवरों से सीखते हैं। हम कितनी कहानियां कहते हैं, बताओ कौन सा दुनिया में ऐसा देश है, मैं कहता हूँ, जो प्रकृति से सीखता है, पेड़ से सीखता है, पत्थर से सीखता है, जानवरों से सीखता है, कण कण से सीखता है। तो हम तो वो देश है, हमको अभी ये कहना पड़ रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी में जाओ तो थोड़ी मुश्किल बात है। तो हम तो मल्टी डिसिप्लिनरी थे, सबसे सीखते थे कि हम वो कैसा व्यवहार कर रहा है उसकी तरह हमें करना चाहिए। तो मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। अब वाई एनईपी इज सेइंग, वाई नॉट ओनली एनईपी पॉलिसी, अदर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो सेइंग नीड फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी इन एजुकेशन। जरूरत क्या है, क्यों प्रैक्टिस करें, अच्छा खासा तो चल रहा था, हमारी डिसिप्लिन के साथ तो चल रहे थे। वर्ल्ड नीड्स, यहाँ पे आई हैव टेकन दिस कोट एंड और दिस लाइन, और मुझे लगता है इसमें सारी बात आ गई। वर्ल्ड नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स। हमारी आवश्यकताएं, अवसर और साथ में चुनौतियां भी कॉम्प्लेक्स हैं, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज बिकमिंग ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। तभी तो कई बार लोग मजाक में कहते हैं अब तो ऊपर वाले ने सरल लोग बनाने बंद कर दिए, अब तो जटिल लोग ही बनाता है। सो अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर इंटीग्रेटेड इन डेप्थ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन फॉर प्रोग्रेस। अकेले डिसिप्लिन को लेके हम आगे नहीं जा पाएंगे। जस्ट रिकॉल कोविड-19, वी वर एबल टू ओवरकम कोविड ओनली फ्रॉम वन डिसिप्लिन। नो, खाली टीके ने बचाया नहीं, खाली मास्क ने बचाया नहीं, बहुत सारी चीजों ने मिलके हमको बचाया। सो वी नीड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन इफ वी हैव टू प्रोग्रेस, इफ वी हैव टू सर्वाइव, इफ वी हैव टू मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। So no more emphasis on discipline, but we have to also move. If you are still confined to your discipline only, maybe you are not contributing as much as you are supposed to. So multiple disciplines for progress, ये मैं कह सकता हूँ। अभी इस पे आते हैं, बेनिफिट्स क्या है। कोई आप लोगों को नजर आता है कि अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रैक्टिस करें, प्रमोट करें,
तो आपकी नजर में क्या फायदा होगा? आपकी बात पहले सुनूंगा, फिर अपनी बात जोड़ूंगा। बेनिफिट्स ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, कि क्या फायदा होगा? सपोज वी आर प्रमोटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, वी आर वेलकमिंग मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इन आवर कैंपसेस, हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस? कुछ भी सही गलत उत्तर नहीं, सोचिए कि क्या आपको लगता है कि यस कुछ फायदा होगा, और होगा तो क्या फायदा होगा? एनीवन इंटरेस्टेड टू? संकोच नहीं करना, जो आपको लगता है बता सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं नहीं मुझे तो कोई ऐसा फायदा नजर आता नहीं, ये भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, चलिए मैं जोड़ता हूं, अगर आपको कुछ बीच में ध्यान आए तो जरूर जोड़िए। क्या है फायदे, क्या है? वाई नॉट ओनली एनईपी, अदर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो सेइंग प्रमोटिंग मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन and motivation is very important. Motivation in teaching, motivation in learning, motivation is a buzzword, and research proves that when we practice multidisciplinary education, our मोटिवेशन बढ़ जाता है। थोड़ा मोटिवेशन का संबंध थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ नयापन आता है। सो वी आर मोटिवेटेड टू डू अवर टास्क इन अ बेटर वे। सो नंबर वन, मोटिवेशन at the level of teachers, at the level of students. Then second, connecting learning to a real world context. Multidisciplinarity is a way to connecting learning to a real world context. कई बार हम अपने कमरे में, अपने क्लासरूम में, अपने लैब में बैठे काम करते रहते हैं। वी हार्डली हैव एनी टाइम टू कनेक्ट, टू गो टू सी रियल वर्ल्ड एंड कनेक्ट our teaching, learning, research to a real world, and multidisciplinary education gives us a perspective. और हम रियलिटी चेक भी करते हैं कि कुछ हम बता रहे हैं और हमारा दूसरा कुलीग कह रहा है साहब आप क्या बता रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। सो कनेक्टिंग, तो आप अगर उसको समझाने में कामयाब होते हैं तो लर्निंग टू ए रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट, बिकॉज देन यू आर मूविंग एंड यू आर ब्रिंगिंग योर नॉलेज टू समवन एल्स, एंड देन समवन एल्स इज रिस्पॉन्डिंग टू योर नॉलेज। सो लर्निंग टू ए रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट। रिसर्च ऐसा भी कहती है कि व्हेन वी प्रैक्टिस मल्टी एजुकेशन, मीनिंगफुल, पर्पजफुल एंड डीपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप करके देखिएगा। आप एक क्लास पढ़ाते, कभी एक दिन एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, छोटा एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, जो कोर्स पढ़ाते हो, उसमें एक टॉपिक लीजिए, एक कोई कॉमन टॉपिक रखिए, और उसको तीन अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर मिलके आप साथ में रहिए कि अच्छा इसी टॉपिक को आज मैं पढ़ाऊंगा, उसी टॉपिक को कल आप पढ़ाओ, और इसी टॉपिक को परसों कोई हमारे और साथी पढ़ाएंगे। और 3 दिन के बाद जो स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव है उसको लीजिएगा कि क्या मजा है। टॉपिक एक रखिएगा, पढ़ाने वाले टीचर सब्जेक्ट उनका अलग अलग होगा, टॉपिक एक ही पढ़ाएंगे। और आप ये छोटी रिसर्च करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट ये आएगा जो यहां लिखा हुआ है। सली साहब करेंगे ऐसा एक्सपेरिमेंट? सलील जी करेंगे? हाँ सर, बिल्कुल 100%। इसमें मतलब कुछ करना नहीं, एक टॉपिक लीजिए कॉमन, बहुत टिपिकल नहीं, उसको एक केमिस्ट्री का यस टीचर सर, पढ़ा दे, एक फिजिक्स, कोई भी, आप 3 डिसिप्लिन, 3 लोग तरह के लोगों से उसी टॉपिक को 1-1 घंटे पढ़वाइए, और जरूर जरूर। फिर स्टूडेंट से बात करिए कि भाई क्या मजा आया, क्या आया, और फिर उसको नोट करिए। तो कुछ अगर आपको फर्क लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कह सकते हैं कि नहीं नहीं जैसा चल रहा है। रिसर्च ये कहती है, रिसर्च इज सेइंग दैट मोर मीनिंगफुल, पर्पजफुल एंड डीपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ज्यादा ये कह रही है कि अगर अच्छे से हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करें तो कुछ ऐसा होगा। ब्रेथ ऑफ नॉलेज, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है कि ज्यादातर डिसिप्लिन से हम लेंगे तो हमारा जो नॉलेज है ब्रेथ है उसकी बढ़ जाएगी, ब्रेथ ऑफ नॉलेज बढ़ जाएगी। एक्वायरिंग न्यू नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज। So we are acquiring new knowledge, but we are not taking our knowledge only for a particular discipline. Our knowledge is an combination of different disciplines. So हम सबसे लेते हैं, जहां से जो भी अच्छा मिले। भारतीय दर्शन यही है कि जहां से जो अच्छा मिले
वो ग्रहण करते रहो, कहीं से मिले फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैं मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करता हूँ तो हम कहते हैं कि हम सब तो ये बात करके हमने छोड़ दी, फिर से हम वो बात कर रहे हैं। तो हमारा दर्शन तो यही कहता है कि जहां से जो अच्छा मिले, कहीं से मिले, किसी से मिले, ग्रहण करते रहो। एक्वायरिंग न्यू नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एरियाज। पहले में ऐसा कहानी आपने भी पढ़ी होगी कि राजा लोग हैं, लेकिन वो चले गए किसी के पास, बहुत साधारण जन के पास, कि भाई मुझे ये सिखा दो। तो वो सोचते हैं मैं तो राजा हूँ, अब बैठा हूँ, मुझे क्या उनसे सीखना। नहीं, वो दैट पर प्रैक्टिसिंग मल्टी डिसिप्लिनरी, वो दूसरे डिसिप्लिन के लोगों के चले गए कि आप तो ये अच्छा करते हो, मुझे सिखा दो। Acquiring new knowledge in different subject areas. So you are broadening yourself. Your learners are learning from different subjects. Uh, ये बहुत बड़ा टेक है, और मुझे लगता है कि शायद एनईपी में जब इसको प्रमोट कर रहे होंगे तो इधर नजर रही होगी। नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैन लीड टू ग्रेटर क्रिएटिविटी। सो मल्टीडिसिप्लिनरिटी may be a potential pathway to lead to greater creativity। आप कितने भी स्टार्टअप देखें, जितने अच्छे स्टार्टअप हैं, सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं, combination of multidisciplinary education, when people from different disciplines, different backgrounds are coming together, working together, leading to greater creativity। So greater creativity के chances हैं, and making worthwhile connection between the traditional subjects areas। Nowadays our subject areas are isolated, we live in island। ये इस सब्जेक्ट का आइलैंड है, ये इस सब्जेक्ट का आइलैंड है, ये इधर डिपार्टमेंट है, ये इधर डिपार्टमेंट है। देर इज नो अपेरेंट कनेक्शन, बट वी आर मेकिंग कनेक्शन between the traditional academic subjects areas। So we are coming together, we are learning from each other, there is a cohesion and learning। So उस संस्थान में थोड़ा लर्निंग बढ़ जाती है, माहौल बन जाता है बिटवीन द ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट्स एरिया। सो फ्रेंड्स, देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। रिसर्च इज अवेलेबल, रिसर्च आर्टिकल्स आर अवेलेबल, so you can go through and you can learn from this। It take key some key points are here that I have listed। Then अब सबसे बड़ा सवाल जो मैं कोशिश करूंगा आपको उत्तर देने की, और आप भी जोड़ सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है, अभी समझ में आ गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ये है, लेकिन सवाल ये कि हम कैसे अपने क्लासरूम में लाएं। मैं तो फिजिक्स का अध्यापक हूँ, आई एम टीचिंग फिजिक्स, and I don't have time to learn chemistry, or I don't have time to learn any other subject। So how I can bring multidisciplinarity in my classroom, although I'm interested in bringing multidisciplinarity in classroom। तो मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा, एंड दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन। जब मैं मल्टीडिसिप्लिनरिटी की बात कहीं भी होती है और मैं सुनता हूं, तो ज्यादा बड़ा आर्ग्यूमेंट यही होता है कि now I am teaching one subject from last 20 years, and how, and I don't have time to learn another subject and bring that knowledge in my classroom। So that's why I am not in a position to bring multidisciplinarity in classroom, in my classroom। Friend, this is a wrong notion। मल्टीडिसिप्लिनरिटी लाने के लिए आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट को सीखने की जरूरत नहीं है। आप सीखते हैं, बहुत अच्छा, नहीं भी सीखेंगे तब भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, एंड देन यू विल रियलाइज, अरे मैं तो ला सकता हूँ इसे अपने क्लासरूम में, मैं तो प्रैक्टिस कर सकता हूँ और अभी करूंगा भी। सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स। यू आर टीचिंग, सपोज यू आर टीचर ऑफ लॉ, आप लॉ के टीचर हैं, और आपको लॉ के टीचर हैं, फिजिक्स सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्या कह सकते हैं, आस्किंग स्टूडेंट टू यूज डिफरेंट लेंसेज टू इवेलुएट केस स्टडीज, रोल प्लेज, इंटरव्यू, जनरल्स एक्सेट्रा। मान लीजिए आपके स्टूडेंट ने कोई केस स्टडी तैयार की। सपोज यू आर टीचिंग मैनेजमेंट एंड योर मैनेजमेंट स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग केस स्टडीज। तो आप उनको कहोगे कि इसी केस स्टडी को आप रिव्यू करिए एज ए सोशियोलॉजिस्ट, इसी केस स्टडी को रिव्यू करिए एज ए साइंटिस्ट, इसी केस स्टडी को रिव्यू करिए एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट, इसी के केस स्टडी को रिव्यू करिए एज ए पॉलिटिशियन। सो केस स्टडी वही है, लेकिन आपने कहा कि चेंज योर लेंसेज, bring lenses from different discipline to evaluate your activities।
जैसे ही आपने ये अवसर दिया अपने क्लासरूम में, आप कह सकते हैं, लुक, आई एम ब्रिंगिंग मल्टी डिसिप्लिनरिटी इन माई क्लास। और ये आसान है, इसके लिए आपको कोई नया सब्जेक्ट नहीं सीखना। एक और बड़ा अच्छा काम हो सकता है, हम कम करते हैं लेकिन आप सोचें, कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। Coordinating seminars or group activities across discipline who may work with similar populations but in different contexts। अलग अलग डिसिप्लिन के लोग मिलके कोई एक एक्टिविटी स्टूडेंट को दे सकते हैं। सो सपोज इन 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 योर इंस्टीट्यूशन देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग। तो आप क्या कर सकते हैं कि मिलके पब्लिक हेल्थ, क्रिमिनल जस्टिस एंड सोशल वर्क वाले लोग मिलके एक सेमिनार कर दी, एक कॉन्फ्रेंस कर दी, एक ग्रुप एक्टिविटी की। सो देन योर स्टूडेंट विल बेनिफिट फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स। कर सकते, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, फिनांसी, आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग एक साथ मिल गए। सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल, दिस इज वेरी मच डूएबल। करना क्या है, डिफरेंट डिसिप्लिन के लोगों को साथ आना है, एंड देन यू आर ऑर्गेनाइजिंग इन सम एक्टिविटीज फॉर योर लर्नर्स। सो योर लर्नर्स आर नॉट लर्निंग फ्रॉम ओनली ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन, दे आर लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। ये ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वी आर सो यूज टू, वी आर सो टाइप टू अवर डिसिप्लिन, वी आर सो टाइट टू अवर डिसिप्लिन दैट हमको लगता है करें, अकेले कर लेते हैं, ज्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबल है, लोग करते हैं। पेयरिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन डिसिप्लिन, दिस इज माय फेवरेट, और मैं आप सबका अटेंशन चाहता हूं। आप करके देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है। सो सपोज देयर आर टू मास्टर्स प्रोग्राम इन योर इंस्टीट्यूशन, एंड बोथ मास्टर्स प्रोग्राम आर हैविंग अ डिजर्टेशन। क्या हम कर सकते हैं कि एक सोशियोलॉजी का और एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट मिलके अपना जो डिजर्टेशन है वो साथ में करे, अपना प्रोजेक्ट साथ में करे। सो व्हेन यू आर पेयरिंग student from two discipline and giving them a collaborative project, they will learn from each other and they will probe the problem in a I can say more in a good way, and hopefully they will come up with a better solution। और सबसे बड़ी बात, उनका पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से सीखेगा, जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है वो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट से सीखेगा। तो ये आप कर सकते हैं, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। एंड of course, this is also very much doable. You can do that. Inviting guest speakers across discipline। हम लोग अपने यहाँ गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं, आपके यहाँ बुलाते हैं, तो हम अपनी डिसिप्लिन, तो सपोज वी आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स, सो ऑल द टाइम वी आर इनवाइटिंग एक्सपर्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स। एजुकेशन के लोग ही आ रहे हैं, सोशियोलॉजी पीपल फ्रॉम सोशियोलॉजी इज कमिंग। हम क्या बदल नहीं सकते क्या, थोड़े से, मान लो 5 लोग बुलाए, 2 इकोनॉमिक्स के बुला लिए, कोई 3 और डिसिप्लिन के बुला लिए। सो व्हेन दे आर कमिंग, दे आर एड्रेसिंग, दे आर एड्रेसिंग योर स्टूडेंट, दे आर टॉकिंग टू योर स्टूडेंट, दे आर ब्रिंगिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड देन पीपल आर रियलाइजिंग ओके दीज आर अदर पर्सपेक्टिव। तो सारी कहानी ये कि मल्टी डिसिप्लिनरी क्लास में लाने का मतलब ये नहीं कि आपको दूसरा सब्जेक्ट सीखना है, नहीं, दिस इज ए मिथ। मल्टी डिसिप्लिनरी क्लास में लाने का मतलब यह है कि आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसमें आपके स्टूडेंट दूसरे डिसिप्लिन के एक्सपर्ट से सीख सकें। लेट मी रिपीट इट अगेन। और अगर ये बात मैं आप तक पहुंचा पाया तो मैं राफे साहब का आभारी रहूंगा कि मुझे ये बात शेयर करने का मौका दिया। हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे साथियों से मैं मिलता हूँ, वो ये सोचते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी तो अच्छी चीज है, लेकिन अब मैं तो दूसरा सब्जेक्ट नहीं सीख पाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ये आपको दूसरा सब्जेक्ट सीखना ही नहीं है। As a faculty member, your role is not to learn another subject and teach that subject in your classroom. As a faculty member, your role is to create such a situation where your learners are exposed to different disciplines, and experts from different disciplines are part of your classroom. आप इतना कर दें
तो मेरा सलाम, मेरा सल्यूट आपको कि आपने अपने क्लास में मल्टी डिसिप्लिनरिटी ला दी। और ये करना मुश्किल काम नहीं है। आप रोज पढ़ाते हैं, आपने अपने साथी से कहा एक दिन मैं आपके क्लास में पढ़ाऊंगा और एक दिन आप मेरे क्लास में पढ़ा देना, तो दोनों पढ़ाएंगे, लेकिन आप अपनी बात यहाँ बताना, मैं अपनी बात वहां बताता हूँ। जैसे ही आपने ये स्वीपिंग की, मल्टी डिसिप्लिनरिटी हो गई। आपने किसी दूसरे डिसिप्लिन का एक्सपर्ट बुला के लेक्चर करा दिया, मल्टी डिसिप्लिनरिटी हो गई। आपने स्टूडेंट को कहा कि इस एक्टिविटी को किसी दूसरे की एक डिसिप्लिन के एंगल से करो, मल्टी डिसिप्लिनरिटी हो गया। आपने दो तीन डिसिप्लिन के स्टूडेंट को एक साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट दे दिया, कोई असाइनमेंट दे दिया, वो भी मल्टी डिसिप्लिनरिटी हो गई। सो द ओनस इज दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम other disciplines. You are helping, you are facilitating your learners to learn from other discipline. बेसिकली दिस इज मल्टीडिसिप्लिनरी। हमारे यहाँ समझ क्या है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि मैंने एक बुके दे दिया जिसमें लोग अलग अलग सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ये मल्टीडिसिप्लिनरी है। वो तो मैकेनिकल है। मल्टीडिसिप्लिनरी रियल जब हम प्रैक्टिस करते हैं वो है। तो आगे चलता हूँ, अगर कोई मन में सवाल आए तो जरूर हैंड रेज करिएगा, पूछिएगा। अ, आप पूछ नहीं रहे तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको समझ में आ रहा है इसलिए नहीं पूछ रहे, या नहीं समझ में आ रहा है इसलिए नहीं पूछ रहे। तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। देन ब्रिंगिंग मल्टी डिसिप्लिनरी आउटसाइड क्लासरूम। तो फिर कुछ साथी ये कहते हैं, अच्छा साहब ये समझ में आ गया कि हाउ वी कैन ब्रिंग मल्टीडिसिप्लिनरिटी इन क्लासरूम, इज देयर एनी वे आउट दैट हाउ वी कैन ब्रिंग मल्टीडिसिप्लिनरिटी आउटसाइड क्लासरूम? तो मेरा जवाब है जी बिल्कुल, क्लासरूम में भी मल्टीडिसिप्लिनरिटी ला सकते हैं, क्लासरूम के बाहर भी मल्टीडिसिप्लिनरिटी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, एक एक करके देखें। सोचिएगा, ऐसा कर सकते हैं। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। क्रिएटिंग एन असाइनमेंट वेयर स्टूडेंट्स इंटरव्यू ए प्रोफेशनल इन देयर ओन फील्ड इन एडिशन टू टू अदर्स। मान लीजिए आपकी डिसिप्लिन में एक सर्वे है, आपके लॉ के है और स्टूडेंट हैं और वो सर्वे करने जा रहे हैं। तो यूजुअली दे गो एंड दे सर्वे लॉयर्स। आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, दे गो एंड सर्वे मैनेजर्स। उनसे कहिए दो मैनेजर का सर्वे करेंगे, लेकिन तीन और लोगों से भी बात करेंगे, और डिसिप्लिन के लोगों से भी बात करेंगे। एंड देन आस्क देम टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट देयर आंसर्स बेस्ड ऑन देयर डिसिप्लिन एंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव दैट ड्राइव देयर वर्क। तो आप दोनों का बात करिए। आप दुकानदार की भी बात से सवाल करिए, और जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उससे भी सवाल करिए, तभी तो आपको होलिस्टिक पिक्चर मिलेगी। आपने सिर्फ दुकानदार का इंटरव्यू लिया तो कैसे बात बनेगी, और सिर्फ कंज्यूमर का इंटरव्यू लिया तो कैसे पूरी बात पता चलेगी। तो आपने एक असाइनमेंट को ऐसा ट्विक किया, ऐसा ट्विस्ट किया कि आपने कहा 5 लोगों का इंटरव्यू लेना, यू हैव टू टेक इंटरव्यू ऑफ 5, बट रेदर देन टेकिंग इंटरव्यू ऑफ all 5 or picking all 5 from your discipline, you are picking 2 from your discipline or 3 from your discipline and 2 from other disciplines. तो ये काम आसान है, इतना मुझे तो नहीं लगता मुश्किल है, हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली एंड व्हेन दे विल टॉक टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, they will certainly gain new perspective. Maybe I'm not saying better, but they will certainly get different perspective, and different perspective will enlighten them. That I can say. So this can be one possibility. ये बड़ा अच्छा है, इसको तो आप अपने क्लासरूम में कर सकते हैं। So suppose you are showing a video to them. You are asking them to read an article. You are reading an article for them. तो आप उनको कहिए कि आपका क्लास है, और आप कहिए कि चलो आपको मैं दे रहा हूँ सोशियोलॉजिस्ट का रोल, आपको दे रहा हूँ साइकोलॉजिस्ट का रोल, आपको दे रहा हूँ एक सोसाइटी का सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, आपको एक डॉक्टर का रोल दे रहा हूँ। सो यू हैव टू सी दिस आर्टिकल, यू हैव टू read this article from that perspective, you have to watch that video from that perspective and share your thoughts. आप देखेंगे कि जैसे ही आप उनको रोल प्ले कराते हैं, उनका नजरिया बदल जाएगा। द मोमेंट यू से नाउ यू आर ए सोशल रिप्रेजेंटेटिव, सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल बदल गया, वो डिफरेंट बातें करने लगे, बिकॉज देन दे आर थिंकिंग ओके आई एम सोशल रिप्रेजेंटेटिव एंड आई हैव टू सी दिस वीडियो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। तो वो रोल भी बदलने की कला सीखेंगे, एंड देन दे आर ब्रिंगिंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स इनटू, तो ये आसानी से काम हो सकता है। अब देखिए, ये भी एक बड़ा अच्छा है कि एक बिल्डिंग बन रही है और एक उसको इंजीनियरिंग स्टूडेंट उसको डिजाइन कर रहा है, और वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरी बिल्डिंग ऐसी बने कि जिसमें जो
डिफरेंटली एबल, डिफरेंटली चैलेंज पीपल हैं, वो भी आसानी से उसको एक्सेस कर पाएं। तो एक तरीका है वो खुद सोचे बिल्डिंग कैसी डिजाइन होनी चाहिए और डिजाइन करे। दूसरा तरीका, दैट इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज मीटिंग विद डिसेबिलिटी स्टडीज मेजर, उसके साथ मिलकर डिजाइन करे। आप अंदाजा लगा सकते हैं तब कौन सी बिल्डिंग अच्छी डिजाइन होगी। संभावना यही है कि वो बिल्डिंग ज्यादा अच्छी डिजाइन होगी जिसमें वन इंजीनियरिंग स्टूडेंट मीटिंग विद डिसेबिलिटी स्टडीज मेजर, बिकॉज देन टू पर्सपेक्टिव विल कम। इंजीनियरिंग स्टूडेंट विल ब्रिंग इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव एंड डिसेबिलिटी स्टडीज मेजर विल ब्रिंग challenges such student face while moving। तो दोनों की जब चीजें बढ़ेंगी तो उसके बाद जो बिल्डिंग बनेगी वो ज्यादा एक्सेसिबल होगी, दैट वी कैन एज्यूम। सो फ्रेंड्स, देयर इज अ वे। मल्टी डिसिप्लिनरी कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक ही मुश्किल है, एक ही कठिन काम है। वी आर नॉट रेडी टू मूव फ्रॉम आवर BHKs टू चौपाल। हम वहां से जाना नहीं चाहते। वी आर सो सेटिस्फाइड, वी आर सो हैप्पी विद आवर BHKs that we live, and we do not like to move. So it is not that you have to leave, you have to move sometime and you are coming back। तो दो बातें हो गई, हम अपने क्लासरूम में कैसे ला सकते हैं, and the second is how we can bring multidisciplinarity outside classroom। Then third is another important take, how we can bring multidisciplinarity in internships and practicums। Can we bring interdisciplinarity in internships? Because internships are now becoming a major part in our programs। Can we bring multidisciplinarity in practicums? हम ला सकते हैं। सो माई आंसर इज यस, बिल्कुल ला सकते हैं, कोई सवाल ही नहीं ना ला पाए। सो लेट्स सी हाउ वी कैन ब्रिंग मल्टी डिसिप्लिनरिटी इन इंटर्नशिप्स एंड प्रैक्टिकम्स। कुछ रास्ता है, कुछ तरीका जी, बिल्कुल है। क्लासरूम में ला सकते हैं, क्लासरूम से बाहर ला सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो प्रमोट मल्टी डिसिप्लिनरिटी इन इंटर्नशिप्स एंड प्रैक्टिकम्स। लेट्स सी, shadowing or interviewing colleagues and partners outside of one's discipline। So whenever, always guide your students, if possible for you, if possible, guide your student interviewing colleagues and partners outside of one's discipline। आप अपने डिसिप्लिन के लोगों से तो बात करते हैं, but it is possible at your end as well as they are also talking to others। Suppose marketing majors meeting with engineers and information technology। तो आपका एक स्टूडेंट है जो अपनी कंपनी खोलना चाहता है, तो यूजुअली प्रैक्टिस ये है कि वो मार्केटिंग में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे मिलेगा, उनसे टिप्स लेगा। लेकिन मार्केटिंग वालों से टिप्स ले ठीक है, लेकिन क्या अगर वो किसी इंजीनियर और IT वाले से मिले तो मे बी दैट पर्सन इज लर्निंग how to make visible the company and through online mode, through ICT। मार्केटिंग में हम ICT का कैसे यूज कर सकते हैं। सो मे बी दे आर लर्निंग सम अदर ट्रिक्स, सम न्यू ट्रिक्स। तो हो सकता है हम सारे मार्केटिंग वाले मिलने से की जगह कुछ मार्केटिंग के एक साथ कुछ इंजीनियर्स भी मिले, तो हो सकता है दोनों को ज्यादा फायदा हो। इवन IT specialist can learn something from marketing। So suppose one IT specialist is designing a software, and that IT specialist is very good in designing a software but is not so good in marketing। So maybe marketing major is helping that person for marketing of that product। So they are learning from each other। So जब हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं तो एक अलग बात आती है। तो ये भी हो सकता है ए पॉलिटिकल साइंस मेजर मीटिंग विद सोशल जस्टिस एडवोकेट, एंटरप्रेन्योर्स एंड फैमिली साइंटिस्ट। So always promote, always guide, always motivate your learner। Of course, learn from pupil, learn from colleagues, from your discipline, but also try to learn from colleagues from other discipline, peers from other discipline। So this is not that you are always meeting with same set of people from same discipline। Of course, you have to, but you can also meet other people। And the moment you are sharing, so they are also learning from you, you are also learning from them। This is a win-win situation। मल्टीडिसिप्लिनरिटी की अच्छी बात यही है, जब हम टिफिन साझा करते हैं तो
हम भूखे भी नहीं रहते और हमारा स्वाद भी ज्यादा बनता है, मन भी ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि वी आर शेयरिंग अवर मील्स टुगेदर। एडॉप्टिंग ए ग्रैंड राउट अप्रोच, ये बड़ी अच्छी है एंड मेडिसिन में बहुत इस्तेमाल होती है। बट वी कैन यूज दिस अप्रोच, दे कॉल इट ग्रैंड राउंड अप्रोच। In grand round approach, similar to medicine, they usually do it where several students from, because in medicine there are different branches. So people from different branches, students from different branches are sitting together and they are putting their perspective कि कोई मरीज है वो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है. So they are reflecting together and brainstorm potential resources or interventions. So you can follow a rounds approach where your students are sitting, maybe students from other disciplines are sitting, and the problem is one, but everybody is seeing the problem with a different perspective. तो आप ये भी कर सकते हैं. दिस इज अ वे that you can do. You can bring multidisciplinarity in internships and practicums. So friends, multidisciplinarity I can say is a need of the hour. हमको उसकी तरफ बढ़ना है. समस्या ये है कि हम दो तीन तरह की चीजें नजर आती है मल्टीडिसिप्लिनरिटी में. एक बड़ा सवाल तो यही आता है कि क्या होगा, हमारी अपनी डिसिप्लिन तो खत्म हो जाएगी मल्टी डिसिप्लिनरिटी में. सो माय आंसर इज, व्हेन यू आर मूविंग टू मल्टी डिसिप्लिनरिटी, योर डिसिप्लिनरिटी विल रिमेन इंटैक्ट. ओनली यू आर शेयरिंग योर नॉलेज बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू योर डिसिप्लिन. आपके डिसिप्लिन की बाउंड्री कहीं मूव होने वाली नहीं है. द सेकेंड थिंग इज, another prevalent myth is that when we are practicing multidisciplinarity, हमको तो नया विषय पढ़ना पड़ेगा. हमको, अब हम तो इस उम्र में नया विषय नहीं पढ़ पाएंगे, नया सीख नहीं पाएंगे. आई से दिस इज अगेन ए रॉन्ग नोशन. मैं फिर आपको कहूंगा, मल्टीडिसिप्लिनरिटी आपके क्लासरूम में लाने का मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरा विषय आप सीखें तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं भी सीखें फिर भी आप मल्टीडिसिप्लिनरिटी ला सकते हैं. You can invite experts from different discipline. You can design your activities in such a way that students are motivated enough, students are facilitated to learn from different discipline. थोड़ा सा आपको बस अपनी पेडागॉजी बदलने की जरूरत है. So bringing multidisciplinarity in education system demands more at the part of pedagogy rather than at the part of curriculum. अभी क्या हुआ है, मैं भी गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वी आर सीइंग थिंग फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव. हमारा सारा जोर करिकुलम बदलने पे है, पेडागोजी की तरफ हमारी नजर जा ही नहीं रही है. हो सकता है मैं गलत हूं, आपसे भी उत्तर लूंगा, आपसे बातचीत करूंगा. करिकुलम से बहुत फर्क नहीं पड़ता. यस, नाउ वी आर ऑफरिंग दैट कि एक साइंस का स्टूडेंट है वो सोशल साइंस से भी कुछ ले सकता है, उससे भी माइनर ले सकता है, उससे भी क्रेडिट ले सकता है. दिस इज वेरी गुड. बट इफ यू आर लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट, आप अलग अलग विषय से सीख रहे हैं लेकिन उन विषयों के ज्ञान को एक साथ मिला नहीं रहे हैं, तो फिर वो मल्टी डिसिप्लिनरिटी नहीं है, क्योंकि वो आपने अलग अलग सीखा, अलग अलग बॉक्सेस में रख दिया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ. द बेनिफिट इज when you are bringing knowledge from different discipline together for your betterment, for betterment of society, to bring new product, creativity, वो आप कर रहे हैं तब बात है. तो मेरा मानना है कि वी हैव टू रियली प्रमोट मल्टीडिसिप्लिनरिटी इन आवर कैंपसेस, इन आवर इंस्टीट्यूशंस. We have to focus on curriculum, but more than curriculum, we have to focus on pedagogical aspect. How to bring multidisciplinarity in classroom, how to bring multidisciplinarity in our campuses, how to promote multidisciplinarity. So multidisciplinary is more a case for pedagogy rather than a case for curriculum. तो कई बार लोग खुश भी हो जाते हैं कि अभी तो हमारे यहाँ बहुत सारा, हमारा जो इंस्टीट्यूट है बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है और स्टूडेंट कोई भी कोर्स ले सकता है. दिस इज नंबर स्टेप नंबर वन, बट दिस इज नॉट ए रियल स्टेप. रियल स्टेप इज ब्रिंगिंग मल्टीडिसिप्लिनरिटी इन प्रैक्टिस, bringing multidisciplinarity in classroom, bringing multidisciplinarity in activities,
bringing multidisciplinarity in approach, bringing multidisciplinarity in processes, और वो आप करेंगे तो यकीन करिए आप भी मुस्कुराएंगे, आपका स्टूडेंट भी मुस्कुराएगा, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, एंड दे विल एंजॉय लर्निंग, बिकॉज नाउ डेज वी आर सो आइसोलेटेड, learning similar things from ages, teaching similar things, so there is no newness. We need new air, fresh air. So multidisciplinarity brings fresh air. So my purpose was, my intent was to bring this aspect into your notice. तो वो मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की। और अक्सर मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात चलती है तो लोग सोचते हैं करे ये तो मुश्किल बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है ऐसा मैं कहूंगा। सो बिफोर आई एंड, so these are some of the references in case you need this presentation. I will be more than happy to share this presentation. और इससे पहले कि मैं अपनी बात फिनिश समाप्त करूं और आपकी सुनूं, क्योंकि अभी मैं आपकी बात ज्यादा सुनना चाहता हूं, मल्टी डिसिप्लिनरी से मेरी बात आप नहीं सुने, आपकी भी मैं बात सुनूं, आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं। सो बिफोर आई स्टॉप, जल्दी से मैंने पिछले 2-3 साल में 2 किताबें लिखी जो आप सब साथियों के लिए लिखी है। सो आई रिटन दीज बुक्स फॉर टीचर्स, एंड आई सी टीचर इज अ टीचर, वेदर दैट टीचर्स टीचिंग इन स्कूल or in university, anywhere that teacher is teaching. So the first is learning and teaching for teachers. So I assume that if you have to teach better, then you have to learn about learning first. तो आपको लर्निंग अगर अच्छी पता है तो आप टीचिंग भी अच्छी करेंगे, अधिगम पता है तो शिक्षण आपका बढ़िया होगा ही होगा। तो हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस एंड देन हाउ टीचिंग टेक्स प्लेस, तो इसी किताब में ये बात है। 5 आप देख रहे होंगे चैप्टर लर्निंग को हैं और 6 टीचिंग को। तो ये अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप आपको पढ़ के मजा आएगा। सरल भाषा में है, बहुत सारे उदाहरण हैं, अनुभव है, मेरे पर्सपेक्टिव है, और ये स्प्रिंगर से है। तो आप अपनी लाइब्रेरी के लिए मंगा सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी जो किताब है वो है टीचिंग कॉम्पिटेंसीज फॉर 21st century टीचर्स। सो आई बिलीव दैट यू ऑल आर 21st century टीचर्स, और हम 21वीं सदी में हैं, अभी तो 25 साल भी हो गए 21वीं सदी में। तो हम 21st century लर्नर को फैसिलिटेट करते हैं, 21st century क्लासरूम्स को मैनेज करते हैं, 21st century टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करते हैं। तो कैसे करें ये सब, इसमें मैंने बताने की कोशिश की है। फिर मैं कहूँगा आपको, ये मैं पक्का कह सकता हूँ, आपको मज़ा तो आएगा इसको पढ़ के, और बहुत सारे इसमें केस स्टडीज है, क्वेश्चंस हैं, फूड फॉर थॉट है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ अच्छी बात यह है कि इसका पेपर बैग वर्जन भी अभी निकाल दिया है रोटलेज ने, तो वो आप खरीद सकते हैं, वो ज़्यादा महंगा नहीं है। हार्ड बैग थोड़ा सा दाम ज़्यादा होता है, तो वो आप लाइब्रेरी के लिए कह सकते हैं। सो दीज आर 2 बुक्स। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक टेक्नोलॉजी को लेके और लर्निंग, टीचिंग लर्निंग को लेके जो मेरी समझ है वो लिखी है, तो वो भी 2-3 महीने में किताब प्रकाशित होगी, तो फिर मौका लगेगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये 2 किताबें हैं, और इसमें भी आप देख रहे होंगे, इसमें भी एक चैप्टर दिख रहा होगा, क्यूरेटिंग कंटेंट फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, तो मिलेगा। और आप इसको पढ़ेंगे तो आप तो बहुत अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन कुछ और आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ। समाप्त करने से पहले ये मेरा ईमेल है, कभी आप मुझे लिखना चाहें, मेल करना चाहें, कोई अपनी बात कहना चाहें, कोई मन में आपके शंका है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ ठीक है नहीं है, कैसे कर सकता हूँ, ये कोई अपनी उपलब्धि भी बताना चाहें तो आपका स्वागत है। सो यू कैन राइट ईमेल टू मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिवर्ट बैक टू रिप्लाई। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग दैट आई विल रिप्लाई immediately, but I will certainly reply, that I can say. So friends, I am stopping with a purpose that I am eager to hear you. I am ending on a note that multidisciplinarity is need of the hour. Multidisciplinarity is a reality. And when we are practicing multidisciplinarity, you are keeping your disciplinarity intact, and you can easily bring multidisciplinarity in your classroom. The only requirement is a little bit change in approach and practices, and this will be a fertile ground to bring multidisciplinarity in your classroom. Thank you so much.
Thank you so much, sir. Thank you so अ, much. अभी बिल्कुल बातचीत करिए, थोड़े सवाल जवाब होंगे तो मुझे भी मजा आएगा, मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा जी। बहुत अच्छी तरह से आपने ये सब बताया है। थैंक यू सर। जी जी Sir, यस प्लीज। good evening, sir. गुड इवनिंग। I have a question, sir. First of all, it was very informative session. यस। Uh, I have a question. Suppose if I am a teacher of biology and I'm teaching a topic photosynthesis. For explaining this concept of photosynthesis in the classroom, I have to take help of the various branches of the science, like physics, how in the presence of the light, the food is prepared. I have to take help of the chemistry, how the carbon dioxide, water get mixed and prepare the glucose, the food for the plants. So for teaching the concept of biology, I have to take the help of the physics as well as chemistry for making it easy for the student. So this is will be an example of interdisciplinary or नो, वेरी intradisciplinary. गुड, सो वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। मेरी नज़र में ये इंटरडिसिप्लिनरी नहीं, ये दिस यू कैन कॉल इट मल्टी because you are explaining your subject with the help of other discipline, so you are using knowledge of other discipline to improve or you to broaden the knowledge of your subject. So this is a case of, I can say, multidisciplinary. You are bringing multidisciplinary. इंटरडिसिप्लिनरी में क्या करते हैं, हम दो डिसिप्लिन को ही मिला देते हैं, सो देन टू डिसिप्लिन कमिंग टुगेदर एंड बिकमिंग ए न्यू डिसिप्लिन। तो आपके केस में आपका डिसिप्लिन अपनी जगह है, फिजिक्स अपनी जगह, केमिस्ट्री है, बट आप उसके कुछ प्रिंसिपल भी अपने यहाँ बता रहे हैं, तो दिस इज अ फिट केस फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी। और बस एक आप इसमें और प्रैक्टिस कर सकते हैं, सपोज आपने फोटोसिंथेसिस बताई, किसी दिन आप थोड़ा फिजिक्स के किसी टीचर को बुला लीजिए, वो शायद फोटोसिंथेसिस आपसे बेहतर बताएं, और तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट टीचर विल ब्रिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, न्यू पर्सपेक्टिव। आप भी बता सकते हैं, इट्स वेरी गुड, बट यू कैन आल्सो इनवाइट देम, तो और मजा आ जाएगा, स्टूडेंट को और सीखने को मिल जाएगा। मुझे एक बात बतानी है। जी। आई एम रमेश। हाँ, आई एम फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन। हाँ, अरे वाह रमेश जी, बोलिए ना। या हमारे पॉलिटिकल साइंस में यूजी सेकंड ईयर को इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी होती है। तो उसमें आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी बच्चों को देते हैं हम। तो हमने क्या किया, एक प्रयोग किया टीम टीचिंग का। तो आईएमएफ की जानकारी जो है वो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कॉमर्स एंड पॉलिटिकल साइंस के फैकल्टी को इनवाइट करके उनके उनके पर्सपेक्टिव में उनको आईएमएफ को इलोबरेट करने को रिक्वेस्ट किया। तो वो क्लास बहुत बढ़िया हुआ था, लेकिन आज पता चला कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी का हाँ, बिल्कुल। अप्रोच हमने वो अरे आपने तो मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत बढ़िया लगा दी, बिल्कुल यही तो करना है रमेश साहब, जो आपने हाँ किया हाँ यही है, कुछ उसमें ऐसा खास नहीं है, आपने जो किया हाँ। बहुत बधाई आपको। और अच्छा, ऐसा करते हो, आपने खुद कहा कि बच्चों जो भी सीखने वाले थे उनको मजा भी आया होगा, उन्होंने मजा आया सीखा भी था। बेहतर होगा। आप चाहे तो उसे सही बात। डॉक्यूमेंट भी कर सकते। और मेरी नजर या में आपने जो किया, दिस इज अ फिट ओके। केस फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। ओके, सही है। आज पता चला। बढ़िया। और कोई साथी, देखिए कितना बढ़िया, Sir, दो I साथियों ने have कितने। one more question. जी जी पूछिए। Sir, on one side, we are dividing one subject into number of sub branches. For example, like English, prose, poetry, then seen passage, unseen passage, letter writing, composition for the better understanding of the student. On other side, we are saying that we should go for the multidisciplinary and interdisciplinary, and so this both these things are contradicting each other. हाँ, ये तो बढ़िया सवाल है, पूरा सही उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। देखिए, ये प्रक्रिया है, हम जोड़ते भी है तोड़ते भी है। तो दोनों तरह की अप्रोचेज है कि हम पहले पार्ट्स को समझते हैं, फिर पार्ट से होल को समझते हैं। तो और फिर जब एक अपना एक होल को समझ लेते हैं, फिर दूसरों से जाते हैं, दूसरे की तरफ जाते हैं। तो अपनी मेथोडोलॉजी है, मे बी इन इंग्लिश यू आर फॉलोइंग ए मेथोडोलॉजी दैट वी विल गो टू डिफरेंट डिसिप्लिन, डिफरेंट ब्रांचेज, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दिस। लेकिन बाद में तो आप, हाँ हो सकता है किसी का मन कविता लिखने में ज्यादा हो, किसी का मन
प्रोज लिखने में ज्यादा हो, ऐसा उसको स्पेशलिस्ट बना सकते हैं। तो वो आपकी मेथोडोलॉजी ठीक है, लेकिन वो प्रोज लिख रहा है, पोइट्री लिख रहा है, लेकिन वो उसको एक सोशियोलॉजी वाले के साथ मिला दिया, तो वो उसके लिए सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? फ्रॉम इंग्लिश दैट लर्नर इज लर्निंग हाउ टू राइट प्रोज, हाउ टू राइट पोइट्री, but with a sociologist, with a farmer, that person is sitting and getting his or her subject. अरे वाह, मुझे तो इस विषय पे कविता लिखनी चाहिए, इस प्रकरण पे निबंध लिखना चाहिए। सो देन दैट डिसिप्लिन इज गिविंग ए, आई कैन से, फूड फॉर थॉट। तो मैं उसमें कोई भेद नहीं देखता, मुझे लगता है कि इसमें कोई झगड़ा नहीं है। आप अपनी डिसिप्लिन सीखिए, लेकिन दूसरी डिसिप्लिन से आपको मिल रहा है। आई होप यू एग्री विद मी। Thank you. Thank you. ओके। Sir, I have a question to you, sir. जी बताइए। पक्का नहीं है Yeah. मैडम मैं आंसर दे पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा। First of all, thank you very much, sir. Learned a lot from you, and you have explained all these things in a very profound way. Thank you so much, sir. माय प्लेजर। सर, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अभी तो एनईपी मतलब बहुत इग्नाइट कर रहे हैं इन सारी चीजों को। But the thing is that in reality, if I have completed my master's in social work, thereafter I have done my MPhil in human development studies and also done MBA, thereafter PhD. But now the thing is that आप अगर कहीं पे पढ़ाने जाते हो या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वहां पे फिर भी अभी तक वो रेस्ट्रिक्शंस तो है ना, मतलब अलाइड सब्जेक्ट और रेलिवेंट सब्जेक्ट की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो किताबी तौर पे, मतलब इन अ रिटन वे। बट जब भी देखा जाता है इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, यू हैव टू हैव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड, देन यू कैन एबल टू टीच। सो अगर हम लोग अपने जो भी मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज में वी वुड लाइक टू पार्टनर, but we have to have that opportunity na. If we will not get that opportunity, then how we will circulate our knowledge? नहीं, ये बिल्कुल आपने लगुनी मैम, यू आर राइट। ऐसा है, लेकिन आप ऐसा करें कि अभी हमारी जो जनरेशन जो आपको मिलती है, दे आर मोर डिसिप्लिन ओरिएंटेड, डिसिप्लिन स्पेसिफिक। लेकिन आने वाले समय में आप एक ऐसी जनरेशन तैयार करेंगे, दे विल वैल्यू, दे विल रिस्पेक्ट डिफरेंट डिसिप्लिन। तो आने वाले समय में बदलेगा, तो हमें अभी से शुरू करना होगा। वी कैन नॉट से कि हमसे तो हमारा डिसिप्लिन ही पूछा जाता है, सो वी विल नॉट प्रमोट अवर अदर डिसिप्लिन। हम उनसे सीखेंगे, एंड देन मे बी इन फ्यूचर देयर विल बी ए जनरेशन रिस्पेक्टिंग मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज मोर, और देर गिविंग मोर वेटेज टू मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो बदलाव ऐसा ही होता है, हम करते हैं, पेड़ हम लगाते हैं या हमारे पूर्वजों ने लगाए तो हम फल खाते हैं। प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके फल उनको नहीं मिलते जिन्होंने लगाए होते हैं, मिलते बाद वालों को हैं। और दैट्स वाई हम लोग लगाते रहते हैं कि हमने पुराने लोगों के उससे पेड़ से फल खाए, अब हम भी कुछ लगाएं तो आगे लोग करें। तो हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ, अभी भी हमारा एक सिस्टम ऐसा है, they still focus on disciplinary knowledge, but slowly change will happen। and I will again say that multidisciplinary का ये मतलब नहीं है कि we are leaving our disciplines, we are going with our discipline, but we are also appreciating and learning from other disciplines, so our knowledge is a better fit for the real world problem, real world challenges। Yes, anyone else, सर friends? नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, मैं बागल सर बोल रहा हूँ। हाँ मेरा बताइए। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है कि अपनी ये जो एनईपी है, वो ग्रामीण भाग में सक्सेस हो सकती है क्या? हाँ हाँ ये जो बिल्कुल। प्रॉब्लम। देखिए, एनईपी क्या है, जो उसमें एक दिशा है, और वो दिशा तो कहीं भी चलेगी कि ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी आप गांव में भी पढ़ा रहे हैं। और मैं तो मानता हूं कि अगर कहीं हमारा ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है, महाविद्यालय है, तो वहां तो मल्टी डिसिप्लिनरी, बिकॉज नेचर से बड़ा तो कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, तो उससे बहुत सीखने को मिलता है। तो वहां भी आप आराम से इसको लगा सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को ला सकते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ वहां भी चलेगा। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ ये मल्टी डिसिप्लिनरी इज पॉसिबल ओनली इन
अर्बन सिटी, अर्बन सिटीज आई कैन से, वहां नहीं, बाकी जगह भी आप कर सकते, गांव में भी बिल्कुल चलेगा, अगर गांव में है, ग्रामीण परिवेश में आपका विद्यालय है तो वहां भी चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो Sir, some last remarks, sir. I wanted your feedback. I'm Dr. Salil speaking. प्रोफेसर, I'm Salil itself. हाँ Dr. हाँ हाँ, Salil ओके ओके speaking. ओके ओके, आई वाज जस्ट, या बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे आपने एकदम यू हैव क्लियरली इलैबोरेटेड अपॉन multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary disciplines, actually. So I was just wanted to have a discussion with you. When we say biotechnology, biotechnology is a confluence of biology, technology, physical, chemical, and the other technology sciences. And therefore, we have created a new discipline, which is indeed, biotechnology. This comes into, according to me, into interdisciplinary. yes, Interdisciplinary. because two disciplines are coming together Coming together. and two methods are coming together, Yes. content is coming together, knowledge is coming, so disciplines are moving, Absolutely. वहां पे So, डिसिप्लिन मूव कर गई। correct, correct. So, this we call it as interdisciplinary. That is Yes. biotechnology, we can say that. Yeah. Is it possible that in management subjects, so usually what happens is now we have seen there are around 20 odd disciplines in management. We've got finance, HR, marketing, then AI and data sciences, and there are operations, supply chain, and all that. There are certain subjects in the universities abroad which are also trying to get into space exploration and space businesses into management. So that is also coming into that interdisciplinary knowledge. So coming to transdisciplinary, will this space travel and space businesses and knowledge of space will come into transdisciplinary? हाँ, वो धीरे धीरे, क्योंकि उसको मिलके आगे चले गए, जहां पे डिसिप्लिनरी और ट्रांस में जो मैं बहुत, क्योंकि देर इज नो फाइनल लाइन, देर इज नो Correct, फाइनल डिस्टिंक्शन, correct, लेकिन correct. ट्रांस डिसिप्लिनरी में जैसे हम कहते हैं ना एक आम बोलचाल में, भाई हमारा काम होना चाहिए, कैसे हो रहा है, कहाँ हाँ, से you're right. हुआ, कौन कर रहा है, मैं जीवन का उदाहरण बहुत देता हूँ, Yes, वो yes. मैं मानता हूँ दिस इज ट्रांस डिसिप्लिन, भाई मेरा काम करा दो, मेरा हाँ, होना चाहिए। एंड व्हेन यू आर डिसिप्लिन, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कितना, व्हेन यू आर इन पार्ट ऑफ दिस प्रोसेसेस, दीज डिटेल्स, यू आर मोर आइंग टू डिसिप्लिन, वो मल्टी हो सकता है, इंटर हो सकता है, बट ट्रांस इज अल्टीमेट। वो साधु संत होते कहते हैं भाई बस दो रोटी आनी चाहिए, अपना काम चल, तो मतलब मीन्स वी आर मूविंग दैट वेयर absolutely. रियल वर्ल्ड को हम कंट्रीब्यूट कर सकें, डजेंट मैटर कौन सा डिसिप्लिन से आया, कौन सा मेथड लगाया, सो वी आर रीचिंग टू, आई ऑलवेज से दिस इज द हाईएस्ट स्टेज, और हम अगर Right, वहां पहुंच जाएं तो बात ही क्या है, तो right, दैट इज हाईएस्ट स्टेज, ऑल्दो पीपल डिफाइन इट इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट टेक, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत झगड़ा है, ट्रांस डिसिप्लिनरी क्या है, मल्टी क्या है, डिफरेंट एकेडमिशियंस कीप गिविंग दीज डिफिनीशन। तो मैं ये नहीं कहता मेरा पर्सपेक्टिव सही है, बट मेरी जो समझ बनी वो मैंने आपके सामने रखी, बिकॉज दिस इज अ वेरी टिपिकल वन, इसकी समझ में थोड़ा सा बहुत अभी कंफ्यूजन है, सो आई ट्राई टू डेवलप माई अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम ब्रिंगिंग दैट। मैं ये नहीं दावे के साथ कहता ये सही है, लेकिन मुझे ठीक लगता है, तो आई एम शेयरिंग, आई विल। lovely, lovely. So this is fantastic. It's a nice explanation. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Okay. So friends, I enjoyed a lot. My best wishes to all of you. So मज़ा आया। रैफे साहब को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपसे जुड़ने मिलने का मौका दिया, और कभी आप नीपा आए, नई दिल्ली आए नीपा में, तो आपका स्वागत है, साथ में हम लोग चाय या कॉफ़ी पियेंगे, बातचीत करेंगे, और बहुत शुभकामनाएं। आप सब एक एक करीब, अब देखिए रमेश जी ने इतना अच्छा मल्टी डिसिप्लिनरी अपने यहाँ कर रहे हैं, अब अभी आज पक्का हो गया वो मल्टी डिसिप्लिनरी उनके संस्थान में है, तो आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। बस ऐसे ही, ज्यादा टिपिकल नहीं बनना है, खुश होना है, अब सबसे सीखना है, आगे बढ़ना है, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं पड़ना, दैट आई से बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, और मौका लगा फिर कभी मिलते। बेस्ट विशेस, मेरा ईमेल है आपके पास, एंड माय डिटेल्स आर आल्सो विद रैफे साहब, सो यू कैन एक्वायर। Thank you so much, sir. Thanks a ओके lot. ओके Thank you so much, sir. Thank you so much. ओके Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Wonderful. ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। Thank you, sir. धन्यवाद। वेरी गुड जॉब सर। सभी प्रतिभागी 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद सेकंड सेशन है एनईपी का,
वो कंटिन्यू रहेगा। योगिता पाटिल मैम सेकंड सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट 10 मिनट का टी ब्रेक लेके फिर से यहाँ पर उपस्थित होगी।
Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes, yes. Yes, ma'am, yes. Yes, ma'am, you are the co-host. You can share our screen. Am I audible? Yeah, ma'am, you are audible also. सेकंड सेशन में अटेंडेंस देनी है? No, sir. I will count also your roll number showing in participant. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible also. Thank you. Yes. Can anyone write in chat box? Okay. Gaurav sir, are you there? Ma'am, Amol here. Yes, ma'am. बोलिए मैम, आपका आवाज आ रहा है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. या यस. Okay, so I think you people were on break. So if break is over, can we start the session? Yes, ma'am. Yes. You can start. Can we start the session? Yes, ma'am. Yes, ma'am, yes. All right. Many of you are putting your attendance in chat box. Okay. So let me share my screen. Is my screen is visible? Yes, ma'am. Your screen and audible also clear, ma'am. Kindly update me in chat box whether my screen is visible to all or not. Let me share once again. Yes, ma'am. I hope it is visible now. So let's start with our session. First of all, I would like to thank the director of Malviya Mission Teacher Training Center, Dhanashree ma'am, and Dr. Rafi sir for giving me opportunity to present my lecture on Indian knowledge system, where in this lecture we are going to see how we can use
this term IKS in our education system. Whatever our subject is there, some of you might be a professor of English, some of might be of computer science, chemistry, physics, electronics, whatever is your subject, but how we can bring our Indian knowledge into our subject, that we are going to discuss today. And what sort of knowledge we were having, and how over the so many years, how many people, right way we can say that in India was ruled by many other foreign countries, and they try to change our Indian knowledge system. They try to change our education system so that they wanted Indian people should be think whatever they are want us to think, and whatever our Indianness is there, so they wanted to destroy that Indianness. So in the year 18, let's move back little. So in the year 1835, a crucial event unfold that changed the course of Indian education. The introduction of Indian Education Act under the influence of Lord Macaulay. Macaulay infamous statement captured the sentence of this sheep, that we must present do our best to form a class who may interpreters between us and the million who we are going to govern or who we want to govern. A class of person Indian in blood should be Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in moral, and in intellect. So with these words, the medium of education was decisively changed to English. Indian languages, Indian texts, Indian philosophies, all were set aside. In their place came Western books, Western thoughts, and Western philosophies. This shift was not just about the language, it fundamentally altered our mindset, as well as over the generation, many Indians began to weave their own knowledge system as this is not good. Whatever Western is there, that is too good. And all we were trying to adopt, trying to bring that Western culture or Western things in our culture. Western system is inherently superior. This thinking was getting deeply rooted in the Indian people. A deep disconnect was created between us and the cultural roots, whatever we were having. Today, as we stand at the crossroad of New India, it becomes essential to reimagine and rebuild our education system. The medium of instruction must to be a Bharatiya Bhasha, or we can call the local language, which we think that it is a true carrier of our culture and the thought. Our Bharatiya knowledge, tradition, and system, our ancient sciences, philosophies, arts, and technology must not remain sideline. They should become an integral living part of our curriculum. Now, how it can be done, or what is the aim of this NEP 2020 or NEP in NEP implementation, how we can implement the NEP, what is a connection between NEP and IKS, what actually the aim of education, and how we can term the knowledge. If we could able to better understand what actually the knowledge is and what knowledge we have, then we will try to bring the Indianness in our subject. So the aim of education is not only for cognitive development, but also building the character, creating holistic and well-rounded individuals equipped with the key 21st century skills. And when we talked about the knowledge, it is a deep seated treasure, and education
help in manifestation as perfection which is already within the individuals. So if you could able to see my slide properly, then you might see here that I wrote here, I put this up, I wrote here Ashad crew 12/13 शके 1947 युगाब्द 5147. You might be aware of how to calculate this Yugabda. Kali Yug, Sati Yug, Treta Yug, Dwapar Yug, whatever the yugas were there. So it is said that whatever the current yug is going on, that is 2025, and the previous was whatever we are saying this in calculation of Yugabda, we are considering the number of yugas. Like it is said that there were 4 different yugas: Sata Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, Kali Yuga, and Kali Yuga is said to have started in 3102 years ago. If we could add this number, that is current year 2025 to 3102, so this Yugabda will be get calculated. So let's move ahead. In my lecture, I am going to cover what actually the IKS is and evolution of Indian knowledge system. What are the characteristics that are get considered? Then framework of Indian knowledge system, core domain, and NEP and IKS. What research, what type of research can be get carried out in IKS? How educationalist, how teacher like you and me can contribute, and what type of reforms we can bring to the education system. So that we are going to discuss. So if I do an action, let's say if I join my hand and if I do like this, so I said nothing. While doing this particular action, I'm not going to say anything, but just I'm going to repeat this action. Carefully observe. So I did my action, and by this action, can you tell me what message you people got? By doing this, what message you people got? Can you describe? Can you write me in the chat box? Can anyone write in the chat box? Yes, namaskar. Yes. So without saying any word, without having any type sort of communication, just by action, I'm trying to do a namaskar. I'm trying to say namaste. And this namaste is for whom? This namaste, we Indian, we Bharatiya people believe that की दुसऱ्या माणसाच्या अंतरंगात असलेल्या देवाला आपण तो नमस्कार केलेला आहे, किंवा समोरच्या व्यक्तीला ऍज अ हा तो देवाचाच अंश आहे, किंवा हा पण एक ह्युमन जो आहे त्याचं ते कुठे देवाचा अंश, तर त्याच्यात असलेल्या त्या देवाच्या अंशाला आपण केलेला नमस्कार आहे. बरोबर? असं काही तुम्हाला आणखी सांगता येईल का? कॅन यू टेल such Indian practices we regularly follow and which means a lot for us? Can you give any example? Can you write any example? I know writing such a thing is very difficult, but can anyone take effort to write any practice that we regularly do and which is very meaningful, or even we don't know why we are following, but touching feet of elderly, we don't know why we are following and who told us. Just we remember that yes, my mother told me, my granny told me, and that type of legacy we are carrying. One more example I would like to mention here. When we eat with our hand, right, आपण जेवताना आपली बोटं पूर्ण वापरतो, right? So we eat with our hand. So when we join our finger and when we have our food with the hand instead of spoon, then it gives us the impression, it gives the feeling of stomach fullness as well as the mindfulness. Or else if we try to eat with the spoon,
So many times what will happen, or it happens, stomach may get full, but mind is not get full. So whatever the mindfulness, stomach fullness is there, so that when we eat our food, when we have our food with the hand, when we join them together and when we have our food, then only that kind of satisfaction, that kind of mindfulness and stomach fullness we get. Or one more example that we can give, the Guru Shishya Parampara that we were having, that which creates a bond between Guru and Shishya, that is not only for the education, but that bond teach student many things like the moral value, the ethics, how to live the life, that what we can say, जी शिदोरी आपण म्हणतो की हाऊ टू लिव्ह अ गुड लाईफ or how to become a good human being, what values, what moral values one particular good human should have, that a student can learn from the guru. So that Guru Shishya Parampara we were following. Many examples we can quote here. It is a way of giving respect, right? Touching feet of elderly. Let me read what you have written in the chat box. Right. Yes. So we can give many examples that is there in our Indian tradition and we are following. There is a scientific reason behind it also, but we people never try to find what kind of scientific reason is there, why we should eat with our hand, why we should not eat with the spoon, what points are get activated, and what type of calculation is will be get in our mind. And whenever we are getting the satisfaction of mindfulness and stomach fullness, so how we whatever we are experiencing, so that is that that is a totally a different thing. So that is our tradition we are following. So when we talked about this IKS, so we can give many examples. So many rituals are there, many religion following different rituals, and they are very is a scientific reason behind it. Now our role is that we must try to dig out the things in order to correlate to the current our living style. What was there in previously our ancestor, in what type of mode they were living, and what type of culture they were following, and what type of science were there behind, and how we can correlate to this modern age, and how we can bring it to the modern education system. So that effort we will have to take. So this IKS is holistic, indigenous, interdisciplinary knowledge system, which covers the all things like science, arts, philosophy, medicine, maths, and environment, and many more. Then from where this IKS is get evolved? So it is deep, it is said to be that it is a deep rooted observation and experimentation. In previous days, in ancient time, when people were not about the documentation, means whatever knowledge they were having, so where to document, how to document, what to write, where to write, by using what, and where I can write, they were not knowing these things. So how the knowledge get then transformed generation to generation, knowledge is orally get transformed. And if someone is very brilliant and someone is very smart, then whatever he or she has learned orally by oral transformation, then he try to remember, and once after remembering or incorporating those value in that particular individual and trying to pass on to the younger one, right? So this how the knowledge were get transformed. So oral tradition, which were then many after years it is get documented. So rich archaeological and traditional sources we are having. Written practices were adopted much more later, and where they used to write on, let's say, palm leaves, then rock edicts. We know the best example of Ashoka edicts, right? Ashok Samba, where he wrote
whatever his thinking is there, whatever knowledge he got, and that was the situational. Once after the Kalinga War, we know well that after the Kalinga War, Ashoka got changed. So that blood war make him change his mindset. He leave everything. He were become the follower of Buddha, and he used to write his thought on the rock, so that we know. Then disciples hearing, understanding, and perception often result in variation and contradiction, which need to be analyzed. Let's say whatever knowledge I have and I am passing on to someone, and if he or she is not enough good in hearing, if not enough good in understanding, then how that person will transform as it is knowledge, whatever he have transformed, because we depend on the understanding level, the transformation was there in ancient India. So let's move ahead here. The roots of modern science and technology. Hanging pillar of many examples we can give here. The hanging pillar of Lepakshi temple is a very good example. Then building of 8 Shiva temple on the same longitude right from the Kedarnath to Rameshwar. So see here what type of thinking um, was there in the people who have built such a kind of marvelous architecture. Then Tanjore temple, which having no shadow effect, that is also a best example of archaeology. You can write many example, you can give many example to your student, which shows that how rich Indian knowledge system was there, and what type of archaeology, what type of science, what type of arts, what type of Ayurveda healthcare system was there in ancient India. Then carving of Hampi. Then many example like in many temple of South India displays different type of what we can say, the engineering, different types of architectural planning, different type of shape we could able to observe, like triangular shape. In triangular shape, their temple was built those days. So what was the thinking behind it? Why they opt that particular shape only? Why not some other shape? So what was the logic? What was the science behind it? That if we try to find out, definitely we will get something good, and definitely we can give a best example to our student, and student can opt this particular subject as a case study. Then Ellora, even you can give the example of Ajanta Ellora temple. Then sound system of Golconda Fort, Jantar Mantar, then 1,000-year Koti Banal architecture of building of Uttarakhand that have resisted natural calamities. That can be a best example. So many examples you can give here, so which will show that how rich our Indian knowledge system was there. And here further, if we talked about the characteristics of indigenous knowledge, then this knowledge was local, cultural, and orally transmitted. See, for example, let me tell you, the healthcare system, the Ayurvedic system, whatever being it followed in Kerala, so that might be differently get followed in the, we can say, Kashmir, in the North India. South India and North India, based on the local environment, based on the local herbs, people were trying to heal a particular disease, right? So whatever locally available, using that, they were trying to cure a person, whoever is injured or whoever is in pain. So they were trying to do it. So it is totally different. So that's why I'm saying that it is local. Local, whatever the method they found, local herbs they were found. So they were trying to use that herb. And so this how it was rich in locally also and cultural also. And the knowledge system were orally transmitted. It is adaptive, holistic, virtual,
vital for the even we can say the survival, rooted in community wisdom, non-formal, dynamic, and adaptive. Right. So these are the characteristics of Indian knowledge system. So when we see the many examples like Panini, Srushruta, Charak Samhita, there we can find the applicability of these characteristics, or from whatever the knowledge they have created or they have transformed. From that we can quote that it was rich, and we can write down the such a type of characteristics. So basically the pillars of IKS, that is philosophy, spirituality, mathematics, astronomy, in all fields we can found there is a huge contribution of our scientists, gurus, rishis, then teachers, all were have contributed to this particular knowledge system. So when we talked about this, so there was a framework of Indian knowledge system. So it is said that Vedas, Upanishads, then Vedangas, Puranas, these were called as a framework of our knowledge system. So let's have a look on it. So here there were, it is said to be that the 4 Vedas has contributed. So what actually the Vedas is? So on my next slide, you people will find what actually the Vedas is. Simple term, I try to define the Vedas. So in our framework of traditional knowledge, so 4 Veds is said, there were 4 Veds, and Vedangas are considered as the limbs of Vedas, or you may call the methods or techniques by which we can learn what actually the Vedas are there. Then 6 type of 6 Veds when we talked about, that is Shiksha, Vyakaran, Chandas, Nirukta, Kalpa, Jyotish, and 3 Upaveds were there: Ayurved, Dhanurved, Gandharva Ved, Stapatya Ved. If we summarize this, then 4 Vedas, 6 Vedangas, 4 Upanishads. So there were total 14 branches of knowledge were there. Rigved, Yajurved, Samved, Atharvaved, Shiksha, Vyakaran, Chanda, Nirukta, Kalpa, Jyotish, Upaved, Ayurved, Dhanurved, Gandharva Ved, and Stapatya Ved. So this have total 14 branches of knowledge were there. So these 14 branches covered spiritual knowledge, language, linguistic, mathematics, health science, arts, music, military science, engineering, architecture, astronomy, and cosmology. So in simple term, we can define वेद म्हणजे सर्वात जुनी ग्रंथसंपदा, ज्याला आपल्याला म्हणता येईल की सर्वात जुनी ग्रंथसंपदा. यात काय म्हटलेलं आहे तर देवपूजा कशी करायची, प्रार्थना, नैतिकता, विज्ञान, जीवनचं मार्गदर्शन यात उल्लेख केलेला आहे. आणि वेद समजून घेण्यासाठी आवश्यक असलेली सहाय्यक शास्त्रे, म्हणजे एखादं जर तुम्ही टर्म समजून घेण्यासाठी कुठलं टूल वापरत असाल, तर यू कॅन थिंक वेदांगास ॲज अ टूल और टेक्निक by which you can understand this particular knowledge. आणि पौराणिक कथा आपण ज्याला म्हणतो, तर त्याच्यात आपण आपल्या देव आणि देवतांचं चरित्र, राजा ऋषीच्या गोष्टी अशा आपण ऐकलेल्या आहेत. तर इतिहास सांगणारे, इन्स्पिरेशन देणारे, काही नैतिकता शिकवणाऱ्या गोष्टी म्हणजे आपले हे सगळे पुराण आहे. अँड व्हॉट ऍक्च्युली द उपनिषद तत्व शिकवणारे, की जीवनाचा उद्देश, आत्मा, परमात्मा, व्हॉट ऍक्च्युली दॅट, अँड व्हॉट टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन देम. सो हे शिकवणारं म्हणजे उपनिषद. इन शॉर्ट वी कॅन से दॅट वेद म्हणजे मुख्य ज्ञानाचा स्रोत, वेदांग म्हणजे वेद शिकण्यासाठी लागणारी साधने, आणि पुराण म्हणजे गोष्टीतनं शिकवण देणारा ग्रंथ, आणि उपनिषद जर म्हणायचं गेलं तर आत्मज्ञान आणि तत्वज्ञान शिकवणारा जो ग्रंथ आहे, तर त्याला आपण उपनिषद असं म्हणू शकतो. राईट. सो मराठी का सांगितलं तर रिझन बिहाइंड इज दॅट इन इंडियन नॉलेज सिस्टम ही जी काही आहे, NEPचा आग्रह आहे. NEP इज सेइंग दॅट लोकलनेस किंवा इंडियननेस जो आपल्याला
आपल्या एज्युकेशन सिस्टम मध्ये आणायचं आहे. फॉर दॅट we will have to decolonize our education system, and we will have to bring the Indianness in our subject, whatever subject you are teaching. So Indianness we will have to bring, and whatever the shiksha we are giving to our student, whatever education we are giving to our student, if it is in regional language, local language, if it is in mother's tongue, so it will be easily grasped and well understood by the student. So that's why NEP is forcing that it should be in local language, it should be in mother tongue language, so that the understanding, if we draw the matrix, understanding level matrix, so that will be definitely high if we try to deliver in mother tongue. So that's why हे मी थोडंसं मराठीत सांगितलं. So these are the major Hindu what we can say तत्वज्ञान and Vedangas ज्ञान जे आहे 14 branches of knowledge. So these are get categorized. So in Vedangas, Upanishad and Puranas. So by following these 14 branches, this is termed as a framework of the knowledge, and in this framework the Rishi Muni, the teachers were trying to deliver knowledge to the student. So same thing just now I told you that Mukhya Jnanacha Strot, it means Ved. If we move ahead, so there are certain myths and fact about the IKS. It is said that it is unscientific. Many people try to prove that how in a very unscientific way the Bharatiya people they are living, they are following. So it is irrelevant, which is outdated. It is too difficult to understand. It is somewhat mythological and more. It is religious. So when we talked about a religion, so it is a very sensitive thing. So in these various ways, many people try to say that how Indian knowledge is not good, how it is irrelevant, how it is cannot be used in modern days, and how the Western knowledge is good. But the fact, if we talked about one shlok is there, which is I have taken from Vishnu Purana. Uttarayata samudrasya himadreyaiva dakshinam varshatad bharatam nama bharati yatra santati. Simple meaning is that the India, where it is situated between the Himalaya and between the Dakshin Sagar is there. So between these are Bharat is located, and in this region whoever is living, so they people are called as a Bharatiya. साधा सरळ अर्थ आहे की समुद्र उत्तरेला असलेला हिमालय पर्वत आणि दक्षिणेला असलेल्या समुद्राच्या मध्ये स्थित जो भाग आहे, भूभाग आहे, त्या भूभागावर राहणाऱ्या लोकांना भारतीय असं म्हणतात. Then if we talked about the knowledge, so formal, informal, oral and written. Whatever knowledge we Indian have, so ते भौतिक पण आहे, आध्यात्मिक पण आहे, ते रिलिव्हंट पण आहे, त्याला सायंटिफिक टर्मने पण आपण प्रूफ करू शकतो. आणि ज्या काही मेथडॉलॉजीज ऑप्ट केल्या गेल्या, फर्स्ट इट वर ट्रान्सफॉर्म ओरली, देन people adopt a method of writing. So they have adopted a method of writing on palm tree. Then they were used to write on a stone. So that type of methodology they were of. If we talked about the core domain of IKS, so here we can consider the case study of Panini. So where Panini wrote around 4,000 rule in Sanskrit. For Sanskrit grammar, he wrote 4,000 rule, and trust me, so same thing is taken, and nowadays we are using the same in natural language processing. See, I am the professor of computer science, so I can tell you that how I can bring IKS to my subject. So this is the best example where I can say that I can consider Panini's grammar rules in the NLP. I'll show you that how the particular sentence is get break down, how lemmatization, tokenization can be done based on these group, how the sentence is get parsed. So I can show you this on the next slide. Then in science, Ayurveda, metallurgy,
maths, we can give the example of Sulabha Sutra. Then in environment, tribal ecology example we can give. So these are the some ancient Indian scientists. So I have make a collage of these great people over here. So let's consider the example as Panini's grammar. So here, systemized Sanskrit grammar, around 4,000 concise rule he formed, which function like algorithm. Nowadays, we are using the term as an algorithm. So whatever complex problem we want to solve, so whatever steps we are going to write in order to solve that particular complex problem is simply termed as an algorithm. But in those days, the Panini wrote around 4,000 rules, and which were considered as a like an algorithm, functioning algorithm, which used to understand the particular shlokas, which used to break down the shlokas, and foundation for computational, and which nowadays act as a foundation for computational linguistic and formal language theory. So here, this is a flow chart which represent language parsing, which totally based on Panini's grammar system. So here I have shown the flow chart like let's say Sanskrit sentence, or you can consider here any language sentence, Marathi language sentence, Hindi, then you can consider the Gujarati language sentence. If there is any language sentence, let's say, then further tokenization, then morphological analysis, and then syntactic rule application. This is again from the Panini's grammar is taken. So this how the understanding of particular sentence by machine is done. We human could able to read, we human could able to search the meaning, human could able to understand that particular sentence. But if we want, same thing should be done by the machine. So the same Panini's algorithm, if we code it and if we give to the machine, then same way like human machine can do. And finally, the output is the parse sentence. Once it is get followed, once the statement is get tokenized, then after that morphological analysis is done, then synthetic rule application is done, then finally we get the parse sentence. And here, this how I could able to relate the Panini's grammar to the modern computational linguistic system where this is applicable. So this how we people must try to find the relevance of our subject or whatever nowadays we are using. So how it is related to the uh, uh, to the knowledge that we have in ancient time, and that if we could able to correlate, if we able to show graphically, diagrammatically to the students, so surely it will create a good impact. Then if we talked about the Ayurveda, so in Ayurveda, they were using a holistic health system, holistic approach they were using. And instead of curing that particular part where it is paining, or instead of curing that particular disease where it has made an impact on the body, so they believe that if they used to treat a whole body, if they used to treat the whole body, then that particular disease is completely get cured. So a holistic health system approach they were following, and nowadays also many doctors also following the same Ayurveda in what we can say, even homeopathy doctor were also believing that the holistic health system should be get considered while treating the patient. And even in allopathy also, they are now bringing this particular holistic approach, which focus on balance and prevention, global integrative medicine links. So here is a picture which shows here Sushrut performing surgery. So this picture is about 4,000 years ago, and which was published by this drug company, MNC Park Devins drug company has published this picture where Sushruta performing the surgery. I think this picture is of your surgery. So there are many pictures where no surgery picture is also there. So here
So how they have performed her surgery without any anesthesia, I don't know, but it was a really amazing. Then Charak Sanhita and Sushruta Sanhita, holistic health approach, body, mind, and spirit connection. They have considered principle aligned with the modern prevention and integrative healthcare. So Ayurveda detox means panchakarma, sometimes integrate with the rehabilitation program for chronic illness which frequently occurring. If the patient is suffering from particular disease and after getting cure again the same symptoms is get found in the patient, so that time many doctors suggest for the panchakarma that your body should be get clean thoroughly so that disease will be get removed from your body, and your body, mind, and spiritually you will be get fresh. So this type of approach is get considered. If we try to relate Ayurvedic concept with the modern science, and then we will find the Agni Karma, Pancha Karma, whatever the toxin are there in body. So in modern science equivalent term, I have wrote here, Agni means gut health, metabolism system we are considering. Ama म्हणजे toxin, Amvat, different types of prakritis get considered, kapha pravritti, pitta pravritti. So then chronic inflammation. So the word inflammation is there. Nowadays, people are saying that in my body, inflammation level is get high, or it's showing a inflammation in my blood report. So what actually the inflammation is? Inflammation is nothing but the toxins, and which are just due to the poor digestion system. So your digestion, if your digestion system is poor, then naturally toxins will be get deposited, or will be get deposited at different what we can say, let's say intestine, or maybe get somewhere else in your body part, and which shows the inflammation in the blood report. So that inflammation is nothing but the toxin. So whatever the term we were having in Ayurveda, so in modern science same term is there but with a different name and with the different treatment, with a different medicine treatment. But nowadays many Ayurvedic things are many herbs, many rasayanas. These allopathy people were trying to use in their tablets, so that they want to heal the patient. The term is allopathy, but by following the term of the Ayurvedic concept. Then Sulabha Sutras and ancient geometry. So we can relate this Sulabha Sutras with the ancient geometry. Bauddhayan and Upastamba Sutras, application of practical geometry in altar creation. म्हणजे आपण जे अग्निकुंड तयार करतो ना, जेव्हा आपल्या घरात काही होम हवन होतात, तर ते अग्निकुंड तयार करताना व्हॉट शुड बी द डायमेन्शन, म्हणजे ते स्टेप्स मध्ये असतं, पहिला चौकोन, दुसरा चौकोन, तिसरा चौकोन, मग त्याचं डायमेन्शन काय असलं पाहिजे. सो दॅट अल्टार क्रिएशन हे ह्या बौद्धयान आणि अपस्तंभ सूत्रावरून त्यांनी अल्टार क्रिएशन केलं. म्हणजे त्याचं ऍप्लिकेशन किंवा प्रॅक्टिकल जिओमेट्री यू कॅन कन्सिडर ॲज अ अल्टार क्रिएशन. अँड नॉलेज ऑफ पायथागोरस थेरम प्रीडेट्स पायथागोरस. म्हणजे पायथागोरसचा सिद्धांत जेव्हा पायथागोरसने मांडला, तर त्याच्याही आधी भारतीय लोकांनी तो मांडलेला होता, बट इट वॉज क्लेम लॅटर बाय द पायथागोरस. एन्शियंट जिओमेट्री इन अल्टार क्रिएशन. Here you could able to see at the right side of my PPT Bauddhayan Sutra, the theorem AC square is equals to EB square plus BC square. We were knowing this by the Pythagoras theorem, but this is the Bauddhayan Sutra which were proposed in India, but later on this theory known as a Pythagoras theory. And this was known to Indians 1000 years before the Pythagoras. सो जेव्हा पायथागोरसने हे मांडलं पायथागोरसचं थेरम, तर त्याच्या 1000 वर्षाआधी भारतीयांना हे माहिती होतं की हे काय सूत्र आहे, पण त्याला आपण सगळे पायथागोरस म्हणूनच शिकलो आणि म्हणूनच पुढे पण पास ऑन करतोय. पण दिस शुड बी अ व्हॅल्यू एडिशन टू आवर नॉलेज, की हे असं आपल्याला
references we should able to find, and we should able to even म्हणजे आपल्याला ज्या नंतरच्या आपल्या पिढीला आहे तर हे पण आपल्याला पास ऑन करता आलं पाहिजे की अरे हे तर आधीच आहे, मग आधी कधी केव्हा कोणी लिहिलं. So in shlokas you can find here a Sanskrit shlok is written, and in Sanskrit they were used to write these kind of sutras and these kind of theorem, these kind of uh, geometrical application, whatever they want to create. So this is Baudayan Sutra, which is the best example. And by following this altar creation, म्हणजे होम साठी लागणारा चौकोन हे बिल्ड केलं जात होतं. देन आर्यभट्ट हे तर आपल्याला माहिती की शून्याचा शोध हा आर्यभट्टाने लावलेला आहे. इवन द व्हॅल्यू ऑफ पाय पण भारतीयांनाच आधी माहिती होती. जसं आता रिसेंटली एक एक्झाम्पल आहे की हळदीचं पेटंट फाईल केलं गेलं, पण वी वेर मेनी इयर्स अगो पासून आपण आता माहित पण नाही कोणी सांगितलेलं आहे. इव्हन आपल्या घरातल्या ज्येष्ठ मंडळींना जरी विचारलं तरी त्यांनाही सांगता येणार नाही की ते हळद हील करण्यासाठी जखमेवर कोणाच्या सांगण्यावरून वापरत होते. तर हे इतकं जुनं आहे, इतकं जुनी लेगसी आपण फॉलो करतोय की प्रत्येक घरात ही हळद काही लागलं की आधी जखमेवर लावली जाते. पण अनफॉर्च्युनेटली म्हणायला लागेल की त्याचं पेटंटही दुसऱ्यांनी घेतलेलं आहे. Then Vara Mira 500 AD. Earth is in spherical shape, Earth's gravity, astronomy. So we Indian were very strong in all the subjects. If you consider healthcare, if you consider maths, if you consider stat, astronomy, physics, everywhere आपलं जे म्हणणं होतं, आपलं जे विचार होतं, तर तो आपण प्रत्येक याच्यात मांडून ठेवलेला आहे. फक्त गरज आहे तो शोधण्याची आणि कोरिलेट करायची. Ancient Indian astronomy. So ancient Indian astronomer also developed a precise method for tracking planetary position and predicting celestial events. They constructed observatories like Jantar Mantar in Jaipur. This is the best example. Jaipur, Rajasthan, which with the sophisticated instrument to measure and study the celestial movements. Then ecological ethics in tribal tradition, scared groves and conservation by the Bishnoi, Khasi and Gond tribes, respect for nature integrated into the religious and cultural practices. हे असं नाही की कोणी फोर्सिबली त्यांना सांगितलं होतं. That was deep rooted in their religious and cultural practices. Then example of early sustainability and biodiversity conservation. असं तुम्हाला एक अर्ली एक म्हणजे याच्यातलं अलीकडच्या काळातलं एक एक्झाम्पल देता येईल की people were talking about the sustainability, people were talking about plantation, people were talking about plant tree, save tree, but we can find many tribes. Here I have mentioned only 2-3 types, the Bishnoi, Khasi and Gond, but there were many tribes. They were well connected with the nature, and whatever the respect they were having towards the nature, so that were there in their religion, that were there in the regular practices. That was not foreseeable. किंवा असं कुठलाही प्रोग्राम गव्हर्नमेंटला राबवावा लागत नव्हता की एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ एक झाड एक विद्यार्थी, असं काही त्यांना करावं लागत नव्हतं. दॅट वॉज डीप रूटेड. दे वर वेल कनेक्टेड विथ द नेचर. कारण त्यांना हे माहिती होतं की इफ ती नेचरची तितकी केअर करत, बिकॉज दे वर नोईंग दॅट नेचर इज ऑल्सो केअरिंग देम, नेचर इज ऑल्सो नर्चरिंग देम. त्यांचं जे काही आहे लाईक अ मदरली एक अप्रोच आहे नेचरचा टुवर्ड्स देम, की नेचरही त्यांची आईसारखी काळजी घेते. सो दॅट्स वाय दे वर very respectful towards the nature, and they were trying to save the nature. Then ancient India and physical sciences. In the field of physical sciences, ancient Indian scholar explored the various disciplines, including the astronomy, physics, and meteorology. We have seen already that Aryabhatta calculated planetary position and proposed a heliocentric model of the solar system that was already proposed by the Aryabhatta. Then Varamira also contributed to the astronomy, geography, and mathematical techniques from predicting the eclipses. Further, that even in trade and commerce and economic system, also we Indian have contributed. Ancient Indian
maritime ventures, boats and ships. Then this was also written in Sanskrit, that how that particular boat was formed, how to build that ship. That technique was also written in Sanskrit shloka by our rishis, rishi munis. So they have already written, and by following that boat and ship were actually get constructed. Then trade commerce in Indus Valley civilization, trade and commerce in Vedic period, trade and commerce in post-Vedic period, development of coinage as a science, early punch mark coins, then Indo-Greek coins, then further many reforms were bring into the coinage also, then Gupta's coin, pre-Gupta's coin. So काय म्हणतो ना आपण हे दळणवळणाचं साधन किंवा जो काही आर्थिक व्यवहार होता तर ते वेगवेगळ्या कॉइनेज म्हणणं तो केला जात होता आणि इकॉनॉमिकली किंवा आपण यांचं माहितीच आहे आपल्याला की अशोकाच्या एज मध्ये जे काही जास्त म्हणतो ना आपला जीडीपी खूप चांगला होता असंही एक एक्झाम्पल देता येईल. Ancient Indian architecture as a science in ancient India, text architecture and town planning in Indus Valley civilization, architecture in Vedic period. Indus Valley civilization architecture is considered as a case study by many universities. What type of architecture was there and why that type of we can say why they have planned such a system, is a drainage system, then colony system, then what was the logic behind it. So that is a part of study. Then Buddhist stupa and viharas also considered as a case study for study. Then temple architecture, rock cut architecture, South Temple are considered as a part of this rock cut architecture study. I believe that no modern engineering can complete without these great ancient architecture that already we have in our Bharat. Here I have shown the few example of temple. By looking at the picture only you could able to judge हे कुठल्या टेम्पलचं पिक्चर असेल किंवा हे कुठं ऍटलिस्ट सिच्युएटेड असेल साऊथ मध्ये, नॉर्थ मध्ये, वेस्ट मध्ये, ईस्ट मध्ये, हे गेस तुम्हाला लावता येईल. सो मार्वलस आर्किटेक्चर वॉज देअर अँड मॉडर्न इंजिनिअरिंग ह्याच्या पुढे एकदम फिका आहे. इंडियाज अकॅडमिक ट्रेडिशन, तक्षशिला University, world first university, Nalanda University, which was unfortunately we can say that was destroyed by Alauddin Khilji. Then Vikramshila University. So these were the universities where education for the liberation and global mentorship was taken into consideration. Then further to this, let's summarize whatever discussion right now or whatever the things I try to put in front of you is that Indian knowledge system is considered as a traditional, indigenous sciences, arts, philosophies developed in India, covering the diverse field like medicine, mathematics, architecture, music, arts, economics, linguistics, ethics, everything is considered in this Indian knowledge system. And why it is important? Because it is a value-based knowledge. It is having a holistic approach and it is a sustainable that we can opt. So, and we need to review it. We need to revisit it. We need to bring it into our current system. So where we can find this IKS in many fields, you can find this Indian knowledge system. So as we talked about the 14 branches of knowledge, or I termed it as a framework of the knowledge, where Vedas, in Vedas we can find this particular Indian knowledge system. In oral tradition we can find, in temples, in arts, then in cultural practices we can find this Indian knowledge system.
When did this IKS originate? So it is considered as in Vedic period, evolving through the classical and medieval times. It was get originated and influencing global knowledge through the continuous development over the millennia. Then who has contributed to the IKS? As I said, the knowledge was transformed orally, and it is up to the understanding level of the receiver, how that receiver receives it, how it or he or she can able to understand, and then he or she can able to transform further. So in this oral transformation, so many people has played the role like rishis, scholars, scientists, artists, like Aryabhatta, Susutra, Panini, Kautilya, has played a major contribution, or you can say the significant contribution can be observed or can be found by these legion to the Indian knowledge system. Then what is the role of NEP and how we can, what NEP is trying to say and why there is necessary or what is the necessity of including this IKS into our knowledge system. So what is the necessity of decolonization of our education system? So as I'm saying, we have to bring the Indianness. So what exactly mean we have to bring the Indianness? So it means that we have to understood the policy of NEP, which foster inclusive quality education and lifelong learning approach, which force or which is saying that the knowledge should be get delivered or knowledge must be get delivered in the local language, in the regional language, so that the understandability level can be increased. Universities aligned with the sustainable development goal that we can call the SDGs, then indigenous learning method across the generations should be get passed on. Research in traditional system must be promoted. We have to motivate our student to do research in this traditional system, to carry out research in traditional system. IKS in NEP 202, that is 2020, ancient Indian wisdom as a guiding light, integration across the all discipline. We have to integrate this Indian knowledge system to the all disciplines, whether it is science, physics, maths, electronics, computer science, whatever it is, elective courses at secondary level. So how we can relate or how we can bring into the education system by offering the many courses, by offering many elective courses at the secondary level itself, and even in the graduation level itself, creating freedom for educators to opt a subject of his or her choice, then training teachers about it, collaborating with the IKS institution and the centers. Then IKS integration into NEP 2020 is possible by including it into our curriculum, and not just by including into curriculum, but also we will have to promote a multidisciplinary research. Then we have to play a supportive role in the language preservation and fostering innovation hubs which focus on the traditional knowledge. NEP 2020, which is emphasizing mainstreaming IKS into school and higher education. So we will have to design a course that can be get offered into the secondary level in a school level, or we can create a course which can be get offered or which can be get put into the basket at the UG level also. Encourage research and innovation in Ayurveda, mathematics, yoga and linguistics. Establish dedicated IKS division under AICT and other academic bodies. Promote multilingual education, including Sanskrit, to access the primary IKS resource. We must have to encourage our students to learn about the Sanskrit as well as the Prakrit language, which are the considered as an ancient language. NEP 2020 aim to integrate IKS to create a future-ready education system rooted in India's civilization and which will strengthen the learner for the global challenge. All colleges offering UG courses should provide many elective. As I said, we must propose a course which can be put into the UG level curriculum.
Students should be able to earn 5% of their total credit through these IKS courses. Regional language or mother tongues should be used for teaching these courses wherever possible. Then we can observe the global impact of this IKS. So where we can observe the global impact. Traditional medicine and in healthcare, everyone is observing this global impact. Recently, we have celebrated the Yoga Day on 21st June. So this Yoga Day is considered as an International Day of Yoga by the United Nations. So the Yoga Vidya is our Bharatiya Vidya, and now which is considered as a worldwide wellness movement, and so that's it is celebrated as an International Yoga Day. Ayurvedic principles like those balance natural remedies are increasingly incorporate into the holistic health practice across the US, Europe, and even the Australia. So here we can observe the global impact. These can be the best example of global impact of our traditional knowledge. Then mathematics and in science, zero invented by Indian mathematician Aryabhatta and revolutionized mathematician and modern modern computing. So when we talked about the decimal system and the algebra trigonometry were the first developed in India and then transmitted to the Europe via the Arab scholars. So whatever was Indian, that later get transferred to the Europe, but which is through the Arab scholar. Then next we can consider the global impact as astronomy and even in space science, metallurgy and engineering, philosophy and spirituality. Herein we can say that the Indian philosophies like Vedanta and Buddhism and Yoga Sutra shaped the global spiritual and psychological thought. Thinkers like Schrödinger and Carl Sagan acknowledged Indian philosophy. So I wrote or I have taken this line from one article where I have find the thinkers like Schrödinger and the Carl Sagan acknowledge the Indian philosophy influence on their scientific world view. So their world view was get influenced by the Indian philosophy. So they have wrote it, and I found that's why I have included in this my slide. Then one example that you can consider in metallurgy, the rust-free pillar, which is situated in Delhi. So that is, you can give an example or can consider as a rust-resistant iron pillar of Delhi. That is, scientists worldwide studied this particular architecture and they were tried to understand the ancient Indian metallurgy. Then ancient water management system, step wells, canals, are today situated in a global sustainable architecture model. So you might have seen these particular step wells. So these the design of step well and how easily one can get down into the well, and the canals are also the considered as a part of case study nowadays. Then educational models, Nalanda and Takshashila inspired models of multidisciplinary education now found worldwide. In many universities like in Germany, in Japan, in America, in England. So they were forcing their student to study multiple subject, multidisciplinary approach. But this Indian universities, Nalanda and Takshashila, were having this kind of approach, and this was then get transferred to the Europe or from here they have demolished this particular education system. They have tried to forcibly change our education pattern, education system. They have tried to change our mindset, and whatever the westernization they tried to bring. So successfully, they have already brought into our education system, but we want to change. We want to bring a reform into education system through this NEP. Literature and language, so many example you can give here. The Puranic Katha like Mahabharata and Ramayana,
which are studied globally, not as just literature, but also for the leadership, ethic, and diplomacy lesson are given. These Puranic Katha are given as a best example for this type of learnings. Then tradition, arts, and music, Indian ragas, Indian music, which influenced by jazz and contemporary music. Sustainable living and ecology. Our approach is Vasudeva Kutumbakam. The word is a one family approach we Indian having, and ecocentric living from Indian tradition are now central to the global discourse on the climate change and sustainability. Then global recognition, if we talked about it, then UNESCO has recognized yoga, Ayurveda, and many Indian knowledge practices as intangible cultural heritage of humanity. So that is the global impact of Indian knowledge system. Then what is the responsibility of educators? The people like you and I must become a beacon of knowledge by deeply exploring the vast repository of Indian ancient wisdom, and seamlessly integrate this tradition knowledge into the modern education system, empowering the present generation to innovate, grow, and flourish by offering the many courses which delivering the lecture of which delivering the knowledge on ethics, the moral values, and moreover we can say the approach towards this particular word that can be put into the syllabus, so that uh, whatever the generation is there, so student generation nowadays we are seeing that they're suffering from many problems, like stress problem is there, then they get hyper easily, they're having their student having many tensions, like study burden is there, exam is there, so again but they are under pressure. So we can help them to come out from this by incorporating whatever our good value, whatever our good methodology was there, by incorporating into their syllabus through the IKS. For effective NEP implementation, foster a sense of pride, incorporate Indian knowledge system that we talked just now. Then all college and universities should make efforts to start and promote the undergraduate and postgraduate courses in all areas which are related to the IKS. All students should learn about the common philosophy that connect different field of IKS. Students should read original text from IKS to understand the subject deeply. So here, no cut for people's business is expected. To connect with the India's oral learning tradition, there should be one practice session where students learn ancient memorization technique using small example from important text. See, here, what actually they expected, whatever the rectification pattern was there, or whatever rectification pattern we currently now having, instead of that, getting a true knowledge, this is an important part. So instead of mugging up the things, if student is able to try to understand the thing, and if he or she is able to write in their own wording, so that we can consider as we have truly demonstrated, or we have truly make them understand about the thing whatever we want to. So this how is actually expected in the NEP and in the IKS. Courses like MA in philosophy, performing art, theater art, Sanskrit, logic, music, and even medical courses should be updated, so that whatever the patterns since many years we were following. So instead of blindly following that particular pattern, by studying whatever the true knowledge we have, and by relating them to the current scenario, current situation, so we can bring the reforms in somewhat extent that I can say. So managing traditional knowledge. So how you will manage the traditional knowledge, or how you will bring it. So definitely you will have to dig up, you will have to go around, you will have to visit many libraries, national libraries, where you will able to find the
what we can say write-up related to the knowledge system or whatever theme you have taken into consideration. So you will have to collect, you will have to validate it, then further you will have to digitize that particular knowledge. And by doing this, or while doing this, so community participation is will play a key role. So you will have to talk with the people, you will have to talk with the different people who we can say that the carrier of that particular knowledge. Then to whom to talk, so that is a big question. Integration into the modern system then only possible. So here you will have to when we are considering this IKS policy and initiative. So in here, in collecting, validating, and digitizing knowledge, as we have to discuss with the people, let's say it is said that in नॉर्थ की एक गाव का बुडा होता है. गाव का बुडा म्हणजे गावातला एक असा व्यक्ती की जो म्हणजे सगळ्यात वयस्कर आहे आणि विदाउट हिज परमिशन, म्हणजे अजूनही आहे ना पूर्व भारतात असं आहे की त्या गावात जर तुम्हाला जायचं आहे तर त्या गावातल्या एक ज्येष्ठ व्यक्ती जो कोणी त्याच्या परमिशन शिवाय तुम्ही ज्यांच्याकडे जायचं त्यांच्याकडे राहू शकत नाही, किंवा त्याला इन्फॉर्म केल्याशिवाय तुम्हाला तिथं जाता येत नाही. म्हणजे इन्फॉर्म पण करायला लागतं, परमिशन पण घ्यायला लागतं. म्हणजे मग हे जे असे ओल्ड एज पीपल आहे किंवा आपण जे म्हणतो की म्हणजे त्यांची परवानगी लागते. हे तर एक एक्झाम्पल मी सांगितलं की गाव का बुडा, म्हणजे की त्याचा इन्फ्लुअन्स त्याच्या कम्युनिटीवर इतका आहे की तो जे म्हणेल ती तिथली कम्युनिटी, तिथल्या गावातले लोक करत असतात. मग जे असे इन्फ्लुएन्सर आहेत ते त्यांच्याशी पण आपल्याला जाऊन बोलायला लागेल की आता फॉर एक्झाम्पल जे ऋषी मुनी आहे आश्रमात राहतात किंवा तपस्या करणारे जे लोक आहेत, आपण त्यांना साधू लोक असं म्हणतो की मग ते पण आयडेंटिफाय करायला लागेल की खरा साधू कोण आणि म्हणजे आय डोंट वॉन्ट टू से खोटा साधू खरा साधू, बट ट्रुली जे साधना करतात ज्ञानाची, ट्रुली जे ज्यांना ज्ञान काय आहे त्याचं ते वाहक असतात, किंवा जे काही त्यांची साधना वगैरे जी आपल्याला करते लोक त्यांना फॉलो का करतात, व्हॉट इज ऍक्च्युअली द रिझन दॅट वी हॅव टू फाइंड. वी हॅव टू डिस्कस विथ दोज पीपल, म्हणजे जे ओल्ड एज पीपल आहे किंवा जे ट्रायबल पीपल आहे. मग ट्राईब्स मध्ये जसं रिफॉर्म आपल्याकडे आलेला आहे शहरात सगळीकडे, असा अजूनही ज्या काही ट्राईब्स आहेत अगदी नॉट रिचेबल एरियाज मध्ये ज्या राहतात तर त्यांच्याकडे इतकं डिजिटायझेशन नाहीये, त्यांच्याकडे असं इतकं टेक्नॉलॉजी अजून पोहोचलेली नाहीये. मग ते जुन्याच पद्धती फॉलो करतात. मग त्यांच्याशी पण आपल्याला जाऊन बोलायला लागेल. सो वी हॅव टू कलेक्ट, व्हॅलिडेट अँड देन वी हॅव टू digitize the things. Then IKS policy and initiatives. Traditional knowledge library is there, that is termed as a TKDL, and ambitious project launched to digitally document India's ancient medical knowledge like Ayurveda, Unani, and Siddha to prevent its misappropriation. Then protect over 2.2 lakh medicinal formulas formulation from being patented unlawfully by the others. National Education Policy 2020, strong emphasis on integrating Indian knowledge system across the all level, which promotes the study of Indian languages, art, science, and culture alongside the modern education. Then Indian Knowledge System Division, IKSD. This is launched by, or this is a project of Ministry of Education, a dedicated body which is shaped by Ministry of Education to set up to collaborate research, education, and promotion of Indian knowledge system, which establishes IKS Center in Higher Education Institution to catalyze the research and innovation. University Innovation Cluster and IKS Research Grants, funding provided by the National Innovation Foundation and the Department of Science and Technology to encourage research project which is based on the traditional sciences like metallurgy, architecture, water resources, management, healthcare, and medicine. Ek Bharat, Shreshth Bharat, and Cultural Impression Program. Government initiative. Encouraging students to explore the India's diverse knowledge, tradition through the field visit, cultural exchanges, and interstate tourism, like which is linked to the IKS theme. So that interstate living किंवा जे आपण म्हणतो की हे कशासाठी, तर इंटरस्टेट लिव्हिंग मीन्स
in order to make them understand, make the student understand about the culture, about the habits, about the tradition of the people which are belonging to that particular state. So they must observe, by observing they must able to understand, and then they must able to write it in their own wordings, whatever understanding they have by observing the things like culture, tradition, rituals, whatever the people are following of that other state where they are going for visit. Then towards a knowledge renaissance, learning from the past to the vibrant future, blending ancient wisdom with the modern innovation is expected. We have to review so that our cultural confidence will be get built up. Building a holistic, sustainable society, integrate cultural, traditional, and innovation. Then how to conduct extensive research on ICAS. So by many ways, even student and teacher can conduct research on ICAS. So here, whatever Sanskrit language, Prakrit language, and regional languages are there, or whatever the text available in these languages. So we have to study these texts. Whatever the manuscripts are get written, or whatever the comments, then whatever the what we can observation were get written in these ancient languages. So we have to read it. Then critical editor editions and authentic translation is expected here, so that we could able to extract the exact meaning that is written in these particular ancient languages. Engage in the field research, interact directly with the traditional knowledge bearers such as Vedas, then which were called as healers, then artisan, temple scholars, and gurus. We have to talk to them. Then visit heritage sites, ancient temples, rural craft centers, and living culture hubs to observe the practices firsthand. Then foster interdisciplinary collaboration. So we have to collaborate with the people. For example, computer science can collaborate with the mathematician. Then humanities can collaborate with the social sciences. So that kind of collaboration we can go further. Many examples we can give here. Utilize digital resources and technology. Save the so here let me tell you this thing. Utilize digital resources and the technology. So whatever the database we are going to create by visiting that particular architecture, visiting that particular site, observing that culture, having communication with the people, whoever carrying that particular legacy, following that particular rituals, like the healers, the gurus, then the person who is serving in a temple. So we have to talk with them and apply the modern tools such as the data analytics, artificial intelligence, and GIS mapping to organize, analyze, and visualize traditional knowledge system. So once we have visited, once we have collected data, then we have to digitalize. It means we have to use these modern technologies in order to show a big picture or show a visualization of the traditional knowledge system. So these current days technologies or tools will help. But prior to that, we have to collect, we have to analyze, we have to validate it, and then further this visualization techniques or modern tools, analytical tools can be applied to the database that we are going to create. Then yes, definitely carrying out research in the ICAS or visiting the several places. There are or drafting a course which is related to the ICAS, or when we are trying to incorporate into the UG level or PG level or even in the school level, certainly there are many challenges. And if there are the challenges, then certainly there is a way out also. So what challenges may be there? So loss of text manuscript. So if we have decided to find the X thing, but if we are not getting the text related to that particular texting, or we are not getting any document related to that, then how we can able to get the information, or then
there are many challenges. So we have to roam around. We have to visit the national libraries. We have to visit the places where the Indian knowledge system is being get studied. So there are many places where these documents are kept safely, and many peoples are there which were studying on these documents and which were trying to identify or trying to understand what knowledge is written there, or what things are hidden in those particular line, in Sanskrit, in Prakrit language, whatever in language they have written, and they are trying to validate, and they are trying to bring it into the current system. Western dominated, as we know that many Western system have dominated our Indian knowledge system. So lack of standardization and scientific validation may possible, but here the solution is that government backed digitization and cataloging of IKS resources, encouraging youth participation in IKS studies through the funding and mentorship, global partnership to bring recognition and integration to the IKS mainstream science. So this initiative is taken by the government of India. If you Google, then you will get about you will know about the IKS. If you Google this iksindia.org, there you will find many programs run by this division of ministry, where there is continuously post of workshop. They announce the workshop, then public notice they have generated regarding the IKS publication. Then they have offer the funding for the research if anyone is trying to look forward for the funding in order to carry out the research. So many opportunities have been posted over there. So you can attend the workshop, you can become the part of the research, ongoing research, or you can propose a research and get the funding for the same. There are many journals and archives and even the MOOCs which will help. The journal focus on the Indian Journal of Traditional Knowledge is there, Indian Journal of Philosophy and Culture is there, which is focusing on the preservation, documentation and dissemination of traditional knowledge and its contemporary application. Then digital archives are there, where you can find many ancient texts like Ved, Upanishad, Purana and Ayurvedic manuscript. These are archives also include the studies, then commentaries and translation to make these texts accessible to the global audience. Open access repositories, which is an initiative by the IITs, NITs and University Grant Commission, that is UGC, have open access repository offering which are playing a supporting role for the researcher into the Indian knowledge system, as well as the projects on this IKS. Then you can insist student, you can motivate student to opt the courses which are run on the platform like Swayam, an initiative by Government of India to study about the Ved Upanishad. They are offering the course related to this, that on even the NPTEL also, so that student can earn the credit and that can be get transferred to their ABC. Then international MOOCs, global platform like Coursera, Udemy also host course on Indian spiritual tradition, classical arts and Indian philosophy. So you can tell your student about this, or even you can explore about the courses here. Then here, let me tell you about the collaboration and government initiative. Ministry of Education in India through the IITs and NITs and other partner institutes, they have decided to support the various programs to integrate IKS into mainstream academia. The collaboration often focus on the research publication as well as in creation of online content which is related to the IKS. Then Indira Gandhi National Center for Arts, that is IGNCA,
and Indian Council of Historical Research also work on preserving and promoting the traditional knowledge system through the publication, exhibition, and educational outreach. So if you are interested in this IKS, so you can Google this sites, or you can Google their websites like IGNCA, then ICHSR, what they are doing and how they are contributing to the IKS, and what kind of facilities are provided for the researchers by them. Then Indian Knowledge System Division of Ministry of Education. Here I have provided a link. So in being an institutional or how student and even teacher can be a part of this, and what type of research, what type of funding is carried out. So you can Google it the same. So let me conclude this session. So whatever I'm talking since 4 o'clock about this IKS. So my main objective was to tell you about the importance of IKS and how teacher like us can bring reform to the education system. Whatever means we were living in the influence of Macaulay and Macaulay, we can say under the influence of Macaulay's education system, whatever best we were having. So somewhere we were trying to say that our knowledge is not good, the Western knowledge is good, but or even whatever the education system we currently having or we currently running. So we people do not have say in any say in that. So our mindset was we cannot bring the reform, but we only the people can bring the reform to the education system by studying, collecting, validating, analyzing our ancient knowledge and bringing it into the mainstream by proposing courses, then carrying out the research, motivating students to carry out the research. So Indian knowledge system is considered to be a gateway to the global leadership. This how we can build tomorrow's leadership. So if we try to put forward, or if we successfully bring forward our knowledge, Indian knowledge, ancient knowledge, and if we try to correlate with our students, so definitely we can say that we could play a good role in creating a tomorrow's global leadership. Education, in education system, we can create through this education system, through this holistic education system, we can create a student which is a self-aware and which can become a good citizen. The student which curriculum by the knowledge-wise, whatever the curriculum subjects he or she, our student is going to study. So he will be sound that way also, but that student will be get sound with the moral values also. With the vision of NEP 2020, the rediscovery and application of IKS are set to enrich. In conclusion, I would like to add one thing, that education, science, and culture globally. So by saying this, so through the interdisciplinary approach, research approach, we can bring these reforms. So initiatives must be taken by us. IKS can contribute meaningfully to the global knowledge economy, fostering tradition-based innovation. So, in order to do these things, so we must have to play a crucial role, being a professor. So we must have to rethink, we must have to study, we must have to motivate our student, and we must what we can say प्रचार प्रसार आपण आपल्या भारतीय ज्ञान परंपरेचा हा नक्कीच केला पाहिजे. Wherever possible, we can use our local language, the regional language. So that is considered as the best medium of transforming our Indian knowledge system. So this is how we can contribute. So thank you all of you for listening, and I would like to extend my thank to again the director of MMTTC, Mahajan Madam and Rafe sir, for giving me opportunity to deliver a lecture on this IKS. Thank you all of you. I'll stop sharing.
Participant, any question, you can unmute themselves. We will permit to all participants. So in this lecture, if Gaurav sir is not there, so in this lecture, I tried to share what initiative is taken by the government of India in for supporting the research. If someone is interested to carry out a research in ICAS and someone want to have a multidisciplinary approach, want to bring multidisciplinary approach into their research, so they can Google these sites which I have shown on my PPT. So that you people will come to know the good initiative taken by the Government of India, Ministry of India, in promoting this Indian knowledge system, and where you can find many conferences, workshop which are organized by Government of India, and you can become the part of that particular conferences and even the workshop, so that you will get the more deep knowledge about this ICAS, and then you can step forward towards your research. So thank you all of you. Is Gaurav sir is there? Yes, ma'am, I'm here. Thank you so much, ma'am. On behalf of Dr. Basambadkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, UGC Malwa Mission Teacher Training Center, a special thanks to Yogita Patil, ma'am, to discuss the ICAS related to NEP. Thank you so much, ma'am. Yes, participant, you can leave this meeting. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Have a good Okay, sir. Thank you. day. Good evening to everybody. God bless. Bye-bye. Thank you so much, sir. Thank you, sir. It was a very informative session.